RYZEN side, it's going to be Global Esports. It's another team that has showed a lot of promise. That lineup, and I think the thing for me for GE is that they started really well in their first couple of games, but I feel like the next few games after the initial games were a little bit shakier and some of the players were starting to fall off a little bit. Now, this is really interesting. DFM and Global Esports last year and even the year before that, again, no offense, big time, it's never gonna get old, but no offense, it wasn't the most exciting match to watch in terms of incredible placements in Pacific, but this is different. This is different now, and it's really important for whoever wins today will have a really good shot, you know, heading towards playoffs. And they're both so much better now. Yeah, this is the uniqueness of this format in a way, where it's like in a group of 6 where 4 go through, 2 wins can be enough. So every win really matters, and this first one, both teams getting off to a win here, I think whoever wins this is going to feel great about their playoff chances. Yeah, expectations for how you're heading into a series are super important. You've got to beat the teams that are beatable. If you draw T1, you might just say, look, it's going to be hard to get an upset, but if you're playing a beatable team, you have got to get those wins, because if you finish bottom 2, it's going to be curtains for you, unfortunately, in stage 1. Here we have the map veto. Very boring, no Ascent, no Icebox, no fun. We're going to play Lotus and Pearl, which are interesting picks for me because these are 2 maps that these teams struggled on in kickoff or had some questionable games on. And now we're going to finish with Split, which was the second map. Was a pick, but it was a very, very close map last time these 2 teams played. So G picking Lotus. We saw the Lotus comp last time, right? I wish I could forget it. I wish I could forget it, Morgan. It was controversial, to say the least. So, I mean, I'm interested to see how much they've revamped their Lotus, if they feel confident enough to pick it. Why don't you tell us about that? Because 2 months is a lot of practice time, like quite a long practice time. You go from playing a bit of a weirder comp, a triple Senti comp, to playing something completely different, I'm assuming, and picking a map. Yeah, so much changes in 2 months. You play so many scrims. You have a lot more time to test things, so they're definitely feeling a lot more solid on it here. It shows by them picking it, so I'm excited to see what they have in store. Bilski, why are you going for DFM today? We see Veer prediction overwhelmingly for the Japanese team. I think I'm a little bit more convinced by them, and I don't know that these new Patrick Hu coming in is going to be a defining factor. I'm a little bit more convinced by DFM. I'm a Patrick believer. I'm a rematch believer. GE, you've got it. Big time. I think we're ready to go to the stage, so let's send it over and find out what those results are going to be.
들어가지고 엄청 기뻤던 것 같아요. 바로 일어나서 제가 가운데 자리를 봤는데 네, 아직도 마크 선수가 앉아 있더라고요. 그래서 저는 많은 감정을 느꼈구나라고 생각이 들었어요. 킥오프 우승은 거쳐가야 할 단계 중에 하나였고 저에겐 아직 가야 할 길이 많기 때문에 킥오프 우승했다고 끝나는 게 아니잖아요. 남들한테 지는 거는 싫어하기 때문에 절대 안 지고 이겨보겠습니다. 이번 스테이지 원도 제렉스가 가져가겠습니다. 저희 알파조에 우승팀들이 많이 이거 말이 좀 어려워요. 퍼시픽 챔피언들이 다 모여 있어. 저희 알파조에 퍼시픽 챔피언들이 다 모여 있잖아요. 그 챔피언들끼리의 싸움을 눈여겨보시면은 그것도 재밌을 것 같아요. 저희가 킥오프 때 좀 많은 시련들이 있었지만 그래도 방폭은 갈 수 있지 않을까 하는 생각은 하고 있었는데 결국 못 가게 돼서 좀 개인적으로는 충격이었던 것 같아요. 일단 제가 잘해줘야지 팀원들이 올라올 수 있다고 생각을 해서 제가 개인적으로 노력했습니다. 알파조에 쟁쟁한 팀들이 많아서 전부 다 경제 상대라고 생각하고 있고요. 일단 당연히 젠진 들어가고 그 다음 TRX 저는 그래도 개인적으로 DFM이 올라가지 않을까. TRX 이기는 거 보니까 다른 건데 TRX 戦に勝った後は周りからもすごく褒められたんですけど自分たちの納得いく結果ではなかったので、マスターズを目指してもっと上に行けたらなと思います。グループアルファにはみんなが全部のチームがパシフィック優勝してるチームだと思います。だからこそ、戦うのがすごい楽しみです。グループアルファの方が、6分の4が突破できると思うんですけど、その4に入るのが難しいかなと思ってるんですけど、最終的にどのチームにも勝たなきゃいけないっていうのは同じなので、グループアルファです。突破できるように頑張りたいと思います。About our group, I will say, it's the same thing with Omega, have insane teams, have just good teams, have decent teams, so just like basically, we just need to aim for the tournament, to the stage one, and start immediately being stronger, being strong on the stage. I think VRX is traditional powerhouse in the Pacific. We let the other team take the trophy's choice, but the tournament is ours. We're gonna do our best to qualify for our playoffs first, and then qualify to Toronto. As I think there's a lot of good teams on our group, just like Genji and Jack and so on. So I think for sure we're gonna make it into the playoffs, like top 4. For me, we're keeping an eye on almost every team, on our group. But I'm focusing more on the top teams because I know we're capable of defeating them. Okay, so going into stage 1, since we have had more time to prepare, we'll be more confident and just trust in our practice. And with that, we'll take down the rest of the teams. We play them nice like in scrims. I think we're pretty confident that we're gonna like at least make it to top 4 and after this. It will be a different boom than what you expect. 첫 단계가 보이는데 그냥 이길게요. This year, I have a big respect of the 3 players, but for other 2, I don't know who are they. We'll go for a stage 1, destroying everyone. it's okay what the rest of the team think, because we also think that they are all the weakest in the group. 2025년은 야리스의 해가 될 겁니다. しばらく日本チームがスタートに行けてないので、マスターズで日本チームがいる景色を見せれたらなと思います。Now it's time to reclaim the honor. VCT Pacific, Stage 1. Rise Pacific.
Destination Focus Me. Woo! Here we go, VCT Pacific. Now we got DFM and Global Esports kicking off our very first day of Stage 1. We got two teams who are showing massive improvements, definitely working and upgrading on those walkouts, and workouts. And we got two teams looking to prove what they're made of. DFM is looking fresh, very different looking than how they ended kickoff just 2 months ago. Yeah, they're feeling good now. I mean, they surprised in kickoff. They had a great offseason. They couldn't convert it all the way. And now is their time to really show everybody what they're about. Can they live up to all this hype? You know, we know they beat PRX in kickoff, but is that going to be enough? Can you carry that through? That's the big question for today. And of course, the big question for Global Esports now with Patrick, who he's here. He's finally here on Korean soil, and he's really ready to join the rest of his squad here. And we saw a lot of promise from the squad already, Pilski. Is this the final piece to bring them to the top? They started really strong in kickoff, and they need to do so again here. A game against DFM is a game that you must win when you're talking about a round robin format. There can be no slow starts here, or it may necessitate you to upset one of the top teams in the group later on if you want to make the playoffs. And we do have two IGLs on both sides who are, I have to say, they are the stars of their squads. They've done so much for their teams. How do you feel they're going to be matching up today? Because we got our coaches, Northern Lights and Juvenile, getting ready to go. These two teams had a lot of time to prep. Yeah, I mean, it's very interesting how both of these teams call. I think GE will lean towards that more structured approach. DFM a little bit looser in how they play. Rewatching that game from kickoff, I felt like the calling from DFM was so on point, and that was a huge part of what got them that win. So I really want to see if they're able to continue that through to today, because if so, I think there's a world where they could look very dominant. I think GE are going to show us another gear where they can see the lineup that they originally thought in the way that they planned it. They're not just going to have to rely on individuals making big plays, players like Papi clutching in those initial games, Yudatan popping off on the duelist. We're going to see what this lineup was put together for, and is that going to be good enough to beat a DFM who started off the year so strong? Now, you guys didn't seem very inspired by the map draft, I have to say. It's not inspiring. They're not playing any of the new maps. But, I mean, maybe with Patrick Hu here, things might be changing up a bit. Oh, yeah. We've got a Yoru in this. Yeah, the GE comp is very interesting. I think it's obviously Breach Tail style. Yoru is able to take that space really well. When they get to defense, expect a lot of trap plays off that Cypher utility. You have a lot of punish. Very different stylistically to what DFM are doing. I mean, DFM, it's the stock standard. It's the old Gen G comp. You mix in the Vice with that. You've seen the popularity of changing up those walls on defense, of using the arc loaders to be able to aggress or get info. So I think for DFM, it's a bit more of a standardized comp from them. Now, we didn't get to hear your prediction for Global Esports, Morgan. Why have we picked Global Esports today? I'm a Patrick Hu believer. I believe in the rematch curse. I just think now's that time. All right, now to bring us through this, we got the Masters Grand Finals casters to take us through Lotus. We've got Achilles and Paperthin. Hello, thank you very much. I'd like to say we did not ask for that introduction. We're just a couple of guys. That's all. Just couple chill guys. Couple chill guys. Anyway, welcome back. Stage 1, ready to begin. Always a pleasure to be back in the arena. Anytime we have a break, we're just like, oh, but you got any more of that work for us? When's that going to start again? That's cool. Because we like our jobs. So happy to be back in the studio and ready to dive into the series, which is a very interesting one. DFM looking very strong during kickoff with the upgrades here. Global Esports, similar scenes, but now with their full original intended 5-man roster, this should be a hell of a clash. Yeah, absolutely. I mean, I think there's a lot to prove for both of these teams here today. You know, they squared up against each other once. During kickoff, it was DFM who won 2-0. Granted, the split was very close. You know, Abyss isn't in the map pool here for DFM, a map that they really relied on to get them some big wins. But I think if you look at this group, if you look at the way that this is going to shape out, in my mind, this is almost a must-win for both of these teams already. This group is stacked. This group is deadly. This group has all of the Pacific champions in it. Can DFM or GE find a way to get a win here, find a way to get themselves into the playoffs as we begin the road to Masters Toronto? Alrighty, well, let us find out. Take a look here. Global Esports
have not been the pistol princes that they have been in the past. It's been DFM who overall have looked quite good in that regard. Let's see if that's going to continue, if Global can start trending back in the right direction. Yeah, for sure. And, you know, pistol rounds are a lot of, you know, hard reads or just, you know, maybe somebody pops off with the ghost, hits some heads. But they're so important right now in the Valorant meta, right? You're going to hear this all over the place that because of the way the economy works, because of guns like the Outlaw that are available, it's really easy to win bonuses, maybe compared to days of old. A little bit of a peek out there. Patrick Hu spots it. But this is all just to try to keep this disguised here. This maneuver from Ken. In behind the box, waiting for his timing, sees the fake out. Clone, swings the corner, finds a headshot. Patrick Hu, welcome to the stage. You have to wait for that second round to begin. You're on the floor. Well, the good news for GE is they did sell this fake well enough. They kept 3 players from DFM on the other side of the map, so they're able to sneak their way through. Yudotan did take some damage, slowed up by the vines. Swing on the corner, the flash is there, but boom, only able to find one. KREO's going to be taken down. Prowler goes out, scouts Crystal here in this position. They know he's behind the wall, still does well to find that kill before getting taken down by Art. He's caught off guard by KREO, lurking just outside of door. The falling though. That does leave Poppy now in a 1v2. Given what we know about this guy, he's absolutely capable of it. Spike, however, still dropped, has to re-tap. Sets up the smoke. Inside the pile of this. 2v1 face in towards Tree, and he gets it damn close, but it will be May to go ahead and close out the pistol win. Yeah, I think what I'm really liking early here from DFM on this defender side is they're playing for trades. They're playing to set up, you know, an early trap there is going to get GN a kill, but after that, every single player on DFM going for the rifle. Not wanting to give him any kind of opportunity here. I thought maybe we would see an early save here from Art, not buy down, go for that Odin nice and early, but well, Jinbung will just get a couple stray shots there, sensing a timing. As Yudotan similarly tagged up, Crystal dead. And the odds of GE putting a dent in this DFM lineup at the moment looking pretty unlikely. Yeah, gonna be very challenging to break through these defenses. Good read here early from DFM, good crossfires. Some really good util from Akame to make sure that some of those players trying to get through. A bit of a stun there. Oh my god. Oh, 3 kills for GN. Woo, that was snappy. There versus Clash, but yeah, that was still very swift. Nice little pivots there from GN. And a very, very clean round. Flawless for the side of DFM as they start offload as 2-0. Yeah, and again, I like that DFM is really playing for each other. God, that's good. And this is kind of what you're going to need for DFM if they're going to start making deeper runs, if they're going to start making playoffs, if they're going to, who knows, maybe make an international event. You're going to need GN to step up. He's this guy that you bring in off of, you know, the rank servers, essentially. He played a little bit here and there, but, you know, May really vouching for him onto this DFM team. Had some rough matches for sure during kickoff, but we know that his mechanical skill, in theory, should be there. Just need to see him kind of integrated with this roster a little bit more. But with that Viper there for the side of DFM, I like this change up for GN. I think it gives him a little bit more comfort, a little bit more room to work the map, kind of set himself up individually in both his team. He can really cut off a lot of the map, keep GE guessing. Drone does get the spot there on a Jinboom. Jinboom a little bit too early with that jiggle peek. As well, Crystal, yeah, I was going to say, door gets opened up. He's got line of sight. ये राउंड हो सकता है, ये राउंड आ सकता है, ये राउंड आ सकता है, falls down quite low. ये राउंड आ सकता है. Taking him to a total of 35 is Spike going to be planted. Jinboom looking to try to scale off this, but he's already noted previously. And okay, distract on the door. The swing out from May, able to find one. Jinboom at the same time, finding Poppy before getting taken out by KREO. Seeing Patrick Hu now versus 2, and Art will be the first to fall. May with just no HP to work with. Not going to be able to get it done. Global will go ahead, deny a bonus conversion, but still suffers some heavy losses. Yeah, some decent damage done, and May there with a quick wrap back towards attacker spawn to find that flank angle and gets a kill with 10 HP. That's a really nice pickup there for him. Good early play through that door, kind of expecting the trap, have that outlaw ready to go. Shut the players down. Nice off angle for Patrick Hu. LAS able to work from up on top. Get that big kill. The IGL trying to hype up the squad. Get GE back involved. Getting close to some ultimates though. KREO only a couple away. One away for Patrick Hu as well, so should be able to potentially grab an orb. Get that Yoru ult, which is so annoying to deal with.
as a defender, especially on Lotus. There's just so many places that you can creep into. Oh, and GN, they just fall right into his open arms. Oh, yes. 4v3 On the swing to be able to really find that punish and save his comrades' lives. They end up getting taken down. Bait out. Without able to find the thorns, find the wall. The pop, but what is going to be the pivot call? We've seen some really impressive spray transfers already from GN. He has been really on point today. And again, big part of DFM's new roster. Getting him fired up, getting him online. Nice sword. Elias pushing forward, beacon to waterfall, able to find one. Cage out, Jinboom just gonna disrespect that. It's gonna be the spike drop now here towards back sight. Finds the follow-up, Yutan not able to try to keep them in the round. All on Crystal. Looking for the first, finds it, the headshot connecting there. The spray a bit frantic, but eludes damage. 1v2. Still though, the salvo's a world away. The high-low setup, and they line up. Oh, nice. Hey. What a rifle clutch as Crystal hits the 3K and ties us up at 2-2. DFM. Oh, they're going to be kicking themselves after that. No doubt about it. That's, I mean, phenomenal work here by Crystal. Really like to see this. GN again, nice play there to find two. This round looks like it's done and dusted. Jinboom holding the back of the site really nicely. Finds an awkward timing where GE isn't able to kind of come at him at the same time. And that's huge. That's a bit of a positional mistake in my opinion on DFM though. If you're gonna run that high-low, there are those boxes in the back corner you can set up on. There's a small bit of movement there. I believe it was Art kind of inching to the side. They end up getting a little bit more clustered together. As look, they're just trying to take their weapons away, flood out in towards rubble, but Global quickly pivoting back. Orb going to be snatched up here by May. One away from having that showstopper online. But with those ults available for the side of GE, you almost have to play retake as DFM off the rip unless you can just bottleneck the front of like B or something like that, which is why you're seeing DFM along with the weaker weaponry really thinking about trying to do something like that. But right now they don't have much information on the map. They're making a hard read that maybe it's A that GE's heading to. They haven't had much contact anywhere else on the map, but Art's about to get a rude awakening. Oh, just a pop of the wall, okay. Top of the wall. Paranoia is still held there by Art. Who's next? Waiting this out is Mask gonna go on. Patrick Koo. Not ready yet. Chasing forward, scouting things छोड़ो बे. Fault line goes through. मेरा चैनल किधर गया रे भाई? Art does manage to slink away, but the side is opened up. GE now in control. 5 members strong. Versus the eco attempt here from DFM. Oh, for DFMs, you'd love to try to get one of, if not both of the ults that are left in play for GE. The Armageddon and the Rolling Thunder out of their hands if possible. See if they can make a go of it. ये तो जाएगा Art. Such a poor spot. Does go ahead TP across to the opposite side, but Shot मारो. Nice. Oh भाई. They're going to be committed. Global Esports just wanting to ensure that they can gain the lead right here, right now. Not going to be a flawless. Here's May able to find two. Some decent damage. Nice one. Will be able to go G fighting. Things up. So an ult committed, but Global Esports now in the lead, 3-2. Yeah, good patience shown by GE, making sure to pop that wall, keeping DFM guessing where they were going to be on the map. Some attempts at hard reads there by DFM on the eco. Not able to quite find the mark, but you got the Rolling Thunder out. Oh, smoke के through मारा बे उसको. So Nice. all things considered, not the end of the world. But you're going to start to need to string some rounds together. Crystal's double kill clutch. Looking to maybe be a difference maker here. As you do have the neural theft as well for Udotan. Of course, Poppy with his ult, but showstopper available for May. And he's just down. He's out. Oh, wait. What a shot there. Patrick Koo just swinging forward. May clearly not ready for that. Ends up getting taken down. So showstopper not going to be a part of the equation. Seeing some good change of pace from GE to start this. Kind of showing some different looks at Rubble. This time around, they're going to take a bit of a pause, kind of regroup, rethink, try to see if they can convince DFM there's somewhere else on the map, but Drone's going to go out, a Prowler from Akame as well. Now DFM trying to gum up the works. What a shot. I mean, Jinbook's just out into the open though. Sure, he's able to find one, but he cannot try to make, trade this back and get into any real advantageous position. Now the neural theft going to be committed. I know exactly where you are. All is just looking for a little timing there on the corner. Kame here at backside, able to find one. The Haunt about to go through, knows that they're scaling forward rapidly, trying to get in on top of him.
know that he's stuck into the corner. The classic drawn out. ओ भाई उदयतन मार उदयतन I'm sorry. So very low. 37 health between the two of them. The face out. Jan knocked down the 10 HP. It was looking like a very solid 1v2 position. Now becomes nigh unwinnable. Unless he can really isolate and conquer here. Swing all the way into the back of the B site. Plant comes through. Just a fault line to work with. 2v1 है जी के लिए Play very far back. भाई दोनों ही हेल्थ कम है भाई उसका भी हेल्थ कम है तीनों का हेल्थ कम है जाएगा इधर ही मारेगा ओह As that trip gets cleared out. LES the fault line at the ready. Time starting to tick away here. Tien looking like the call is going to be this is not going to be a round for the team. Fault line does hit its mark, but he's just going to go ahead and drift away from the spike, which will erupt as Global Esports maintain the lead, stretching it by 2 rounds. This is starting to look a little rough for DFM. It seems like that one round kind of changed their destiny. It looked really clean early. Since then, they haven't really found those kind of timings, those moments where they're able to kind of play off of each other. Wow, that's a nasty shot from Patrick Hu. That's why you're bringing him in here. Be that duelist, be that entry fragger. Can kick doors in for you. GN there, that last one, he had a chance if his crosshair was just a little bit lower, but he was expecting the wide swing. Therefore, took a ton of damage. Not able to get any other value out of that round. Again, though, big ults, judge for Art. So, gotta be careful here as GE. I mean, flashed up, kind of just all clustered together over towards the baby door here. Kami gets taken down, TP forward, up into the smoke. Patrick Hu, feeling past, able to find one. Art does finally strike that judge being put into play, but he's not ready for Yudotan. And May, the crosshair is off center. And now, just Jinbung, 10 HP for himself. See if he can do any additional damage here in this round. Seems relatively unlikely as Global Esports starting to really run away with this opening half. 5-2 about to be the scoreline. Yeah, for sure. This is a rough map. The one time we saw it for DFM, they squared up against Gen G. Not going to quite catch the timing there as Crystal. Jinbung going to keep sliding away, trying to save this gun as best as he can, and GE knows it. He is utterly surrounded, though. Crystal now down here on the site. Jinbung just trying to stay as quiet as he possibly can. Ooh, I think he spotted a pixel, though. He has no idea. The Crystal's forward, but Crystal jumps up onto the box. Oh, Crystal गया रे. Fast enough, but now there's blood in the water. Jinbung का Sharks getting ready to surround as Jinbung about to push out over towards Mount Poppy. खाएगा Poppy को. Oh, shot, nice shot. So Poppy cleans it up. 2 players lost on the side of GE, but plenty of cash behind. Start really racking it up. Now it's a lead of 3 rounds, and it looks like DFM will be calling the first timeout of stage 1. Yeah, I mean, I think this makes a lot of sense. To me, this feels like the protocols of DFM are starting to fall apart a little bit. They're getting flashed up, they're getting stuck by the baby door. And then when Art TPs forward, there's nobody there to cover those angles, to kind of watch the extra space that he's giving up by hiding inside of his own smoke. So there seems to be some problems, some disorganization from DFM. Going to need to try to work that out. On the other side of things, GE looks really clean. They're starting to kind of shake off some of that rust we saw in the few opening rounds. Since then, they've looked really nice. They're crisp. Their shots are hitting. They're playing together as a team very nicely. They're kind of keeping DFM guessing other than maybe that last round where it was just a fight over rubble control. But I'm pretty impressed so far, especially Patrick Hu. He's hit some really good openers. Now, it's been some good setups from the breach, but still, gotta like what you're seeing. Yeah, and I think that was the big curiosity for a lot of people, was how quickly integrated can Patrick Hu get. Obviously was the original 5-man, the 5th man, the one that they wanted to have in that duelist position from the very outset. Did get bogged up, but was able to have visa stuff sorted out coming into the stage. But was it going to be enough time? Would they get enough practice? Would things click immediately for the team? So far here on the attack, it's looking pretty good. Yeah, absolutely. I'm really, really impressed. And it's going to be Sheriffs for the side of DFM. I mean, this is mad. Read like this a book now. They know madness. exactly where भाई it's at. क्या एग्रेशन है भाई योरू का. मार दे भाई, मार दे. पिस्टल मार दे.
It's like one of those plays where if they don't go that way, you're going to get that extra step ahead of them maybe to try to get a quick flank. But that would have been great if all of Global Esports were blind. Yes. Turns out pretty hard to play Valorant. Yeah. If you're blind. Should have just, you know, you have the assistant coach run over and unplug the monitors real quick before the round starts. May, though. Fantastic headshot. One of the best. You know, I think there was that stat that if he gets over a certain amount of kills, like DFM just wins. It's 17. Is it 17? Is that what it was? I believe so. I mean, makes sense. But a change up here in the vice wall. It gets GE a bit off guard. Yudotan did get a spot on it and pops it. And they're just going to pivot into B. The pit was used by GN over at C. So he's going to be able to kind of lurk his way out of there, but pretty easy to read for GE, you would think. See what they want to push do. up through upper, though. Yeah. Jinbung still checking down towards stairs. Now sights being turned back over into this direction. Yudotan fading away, spots out that shoulder. Jinbung locked in position here for the moment. Second shot from Crystal will Oh, Crystal, nice shot. Oh my God, desperately needed the breakthrough there. That shot was just instantaneous. Nice one. May getting timing a bit. Skelias from behind will be able to find that kill. So tempted a thrifty, some nice shots in the mix, but timeout भाई वो रिफ्लेक्स में दे देता भाई उसको. It's going to be for the setup here on this round. Really enjoying the way that GE is also integrating the Outlaw into some of these rounds. Like we've been seeing them pick it up against the Ecos to really not give DFM many options, many chances. If you're just holding those angles, watching it, it's going to be real tough to get that sheriff shot to go. May is going to grab an operator, though. Still sitting on a showstopper for, what is that, 3-4 rounds now? It's been quite some time, and I thought it was going to be something we saw invested in the previous round, given that they also went for the pit. But not to be seen. Spot out there on the Jinbung Poppy, going to be being all the way here, well into the back, and Patrick Gu as well, just jumping out. Finds May with a shorty in hand. Crystal sends out the Armageddon. Jinbung absolutely obliterated. Yan को मारेगा. Nice. Patrick Gu on the swing. आर्क को तो नहीं मर सकता I think. What? Plan नहीं हुआ. Getting caught off guard. It seems like the timeout in the end not going to lead to a round win. Yeah, and you can see GE here adapting to a lot of the meta that we saw in Masters and in some of the later stages of kickoff with, you know, the Breach Teho, but also the Yoru. The Yoru is a huge part of this. You can get that all. You can identify where May is. You can then call in Crystal's Armageddon right on top of the majority of DFM. Akame and Art, okay. You're going to get a couple. Not going to drop the guns just yet. I mean, but in the end, just need to hold on to these. Nothing else to play for other than their lives. Ults are online. भाई सी पे प्लान और सी पे कोई गया ही नहीं. As Akame looks to try to hold the door, Art will be able to find that second kill. Poppy on the chase. TP across. Okay, 7-2, not bad. In the end, Art will be the lone survivor, but Global Esports 7-2. 7-2. Yeah, and Global Esports is doing a lot of things really well, and DFM is not. In terms of, frankly, the way that they're cycling their ults, the way that they're combining some of their util and things like that, whereas it doesn't feel like DFM has like any kind of comfort with when they want to use the pit or the showstopper or some of their ults to kind of try to turn around, try to get something going. Instead, they're the ones playing on the back foot. GE, of course, attacking hai bhai. I get it. It is generally the stronger side of the map, but I'm not seeing some of the ideas and adaptations from DFM that you would like to see. And it's like they're trying to hide the showstopper for like a big moment instead of just maybe using it to take rubble control, change the map a little bit. उधर तक जाएगा. Oh, nice dodge. Dodge तो अच्छे किया बे. Around this A site could be a pivot in towards B, where it's just coming for the moment by himself. Looks like Global going to look to try to explore this space here, make sure that's going to be cleared out. Maybe even cause distraction for the rest of the team as they get ready to attack. I mean, Akame's in a difficult position, potentially. A pinch being set up here by GE towards B. Oh no. Crystal thinks about the Prowler. And maybe a Oh, what the? Art को ले लिया. Checks for
for a little bit more. Haunt now destroyed. As the showstopper into the corner, gets the spot out. Yutan going to be blown to smithereens. Shell down onto the site. Coming with a re-peek back in from main will be Okay, 7-3. At long last will break the win streak as they give themselves a third round victory. Yeah, this time around the timing there, I thought Akame might be just screwed. But instead, him and Art are able to find that timing to get ahead of the crunch attempt by GE. Find a couple big kills. Got the Nightfall online, threw it out there. Art doesn't get the immediate trade off that Nightfall, but that's okay. Akame's good for it. Now you can finally use that showstopper, clear the corner, paint shells to clear the site. And then that is going to be a much needed round win. If you can make this 7-5, that's okay for DFM, honestly. If they can win these next couple, okay, you drop 7 in a row, big deal. It was defender side of Lotus. Definitely recoverable. A lot of attention now. Using the drone, clear B, TP in as well. Double TP forward once again this time. Gian not in a position to go for the transfer shots. Art, however, just trying to scale पूरा side ले लिया बे. Just a shooting gallery, one by one. They just give line of sight over, and Global just hit every single target. Yeah, it just felt like trying Side तो hold हो गया रे. जी का. Trying to catch him off guard with some of these Overpick नहीं. Nice one. Pinch is there. Yutan breaks through the door. Gives him the bad news. Akame falls. Global now look for a 9-3 scoreline at the half. Yeah, and some of these ideas that GE are implementing are very reminiscent of some of the stuff we saw from DRX at Masters. Some of these double TPs, aggressive positioning towards site, kind of keeping DFM a little bit off balance. Nice paranoia there to make sure that no more further damage can be done. But yeah, the tempo changes from GE, really nice. And again, you're going to have an operator and an outlaw. Peace. A lot of variation in what GE can bring to the table. A couple of the players do have full armor for the side of DFM, a judge for GN and a judge for Art. And Yutan short way. is able to find the shot. Art a bit too slow now. That neural theft once again telling all. Pivot getting ready to come through. Looks like DFM does have the right read. They're starting to go for the pivot back over to A, but then they rethink it. Double peek back in from Waterfall slows up the reapproach here from GN, who would love to be in position a bit faster, given that he just has a judge. What? Excuse me. क्या मारा बे उसको? I don't know if like an elbow stuck through that smoke or something. I know your name stands for guided missile, but guided bullets. What the? That's just unfair. Crystal ना मान रहे आज. Is able to find a second. Gives them an opportunity, but Crystal's still here. Both players pushing in from his angle. They're going to be sent out. Akame trying to keep them all held at bay. But there's the rolling thunder. Akame has fallen. Crystal भाई ना मान रहे आज. Now it just feels like Jin has no hope in hell. Both players just stuck back at tree. The time is ticking. Jian है आप. No real opportunity. Trying to make a go of this one. A triple face finds the first. Nice one. 9-3 भाई कार्स ना हो जाए. Global Esports. Very much answering all the questions we had about the integration of the roster and how they would be looking. Things look pretty damn clean. 9-3 कार्स ना हो जाए फिर से. It's great coordination. It's good ideas. You know, some good sniping. Knowing when to implement the outlaw. Sports में कार्स वर्स कुछ नहीं है भाई. Just kind of ahead of the curve of DFM. The comp as I well. think. Really oppressive. It just seemed like DFM was getting caught out by utility or getting outthought in the idea department. Out, kind of alt-scaled, alt-rotated. You know what I mean? Like it's just everything was just going GE's way, and they were finding a lot more impact in just about every aspect. So I was just caught off guard. Alt-cycle, that's the word I wanted. There you go. Yeah. Caught off guard by the music here for a bit. Sounds like we're in a early 2000s like knockoff Matrix style film. Yeah. Shots of the action hero walking down a sidewalk or something like that after he just killed a bad guy. It kind of does, yeah, a little bit, yeah. I could, if they would throw Half this in the time, soundtrack, I wouldn't be shocked, yeah. Or like, what was that Christian Bale movie? Oh no, do you remember it? Called like Ballistic or something like that? No. Which Christian Bale movie? The one where he's like got like the guns and he's like doing all this like martial art gun stuff. Do you remember that? I know exactly what. They like had like the white like trench coat or whatever. What was that called? Equilibrium. Akema. It's
Beauty say. I thought it, but I'll admit I did look it up just to make sure that I was correct. Yeah. Anyway. I mean, I'm concerned. Like, the first couple of rounds, I'm like, man, DFM, they look well drilled. They're playing off of each other nicely. Sorry. Good util. And then it all just went out the window. All right, well, pistol round. Oh. The opener went the way of DFM, but भाई जीत आज नहीं मान रहे. the action dead immediately. We'll be calling here from beyond the grave. I mean, they're still trying to take that space. Jinbung trying to create some attention towards the other side of the map, but to me, DFM is looking like they're not exactly sure where to go. Ooh, Udotan had a chance. Went for that moment after getting the tag with his util and thought, see if I can catch him a little bit off guard, but Jinbung there lucky to get away with his life, in my opinion. They're going to try to go this way. I don't think they've... They have no information about Poppy. Exactly. They pinged the spot, but do they think that's where Udotan went? For now, Udotan on the third attempt will be able to find it. Jinbung going to be taken down. 2 players lost. Some decent damage onto the lineup here of Global, but elimination still not quite yet in their hands until May manages to find Patrick Hu. A-site opened up a bit. This tripwire. Time, ooh, starting to dwindle. This trip is going to be cleared. May pushing his way through, but Crystal on that peak, finding one. Jin going to be taken down. Akame does get into a position to go for the plant. May is instantaneous with that headshot. Poppy, however, arriving, interrupts the spike plant. It's now just stranded here on the floor. 12 seconds remaining. As May sends out the paint shield, trying to buy himself some space. Gets drawn off of the plant. Challenges in for a fight, but he's just out of time. He'll find the kill. But surely, yep, it is just too late. Off by a hair. Global Esports just steal away the pistol round. But again, it just feels like DFM is a bit lost. The coordination, I mean, the call is to spread the map, but really they're lost on the positioning of where GE might be, you know, almost getting caught out trying to go for an orb. And then when you push into the site, you're not expecting 2 to be there. You kind of just read that it'd be a full मौज में है जी. From Udotan, you know, you're only showing the Vice yourself, so you're just kind of like, okay, it's lurk player versus lurk player. You know, let's see what we can get done. Let's see if we can catch him off guard, but GE not fooled in the slightest. You know, see the buy down. Yeah. Still not even overly strong. May able to get himself a Guardian, the full armor there. Otherwise, 2 Stingers, 2 Sheriffs. And Art's going to be glass cannon. Not much of a cannon, I suppose. It's a Stinger. It's a mini cannon. I mean, in the hands of, you know, G2, kind of a cannon. Oh, sure. They play a very different game. Yeah, their stingers hit different for sure. But just a walkabout behind the toxic screen. Kind of that classic one you'll see that cuts up towards a site. But all of the Cypher util is here. Kind of slow things up. And you just got a huge stealth drone over at C. Past mound, almost into spawn for GE. They know full well that this is a. Elias already here. Gonna guide them to an 11th round win. Haunt does get a reveal. Patrick Hu. Noted by that is Art. बे sound किसका आ रहा है बे? Back side से. It's just far too slow, and Patrick Hu backs across, finding him now, spraying wildly into the smoke, and one by one they shall fall. Udotan. जी तो दे रहा है भाई. 2 remaining players absolutely tagged up. Akame has been doing well to find some frags, but it's just not going to be enough. GE now up to 11. DFM once again broke. हाँ, Global Esports का G का peak है भाई ये They're playing it extremely well, disrespecting the util a little bit there, getting the info. That's a huge advantage in these compositions as well that GE is really abusing. You know, for DFM, it's a lot of trying to obscure where you're going. You're trying to use this double controller comp to keep GE guessing, whereas GE has a lot of tools to deal with that. They've got the drone, they've got the Cypher util, so they can get ahead of the curve. And DFM has not found great answers. The Teho utility is so oppressive to control space as well. Not just with the stealth drone, but obviously with the salvos. You know, and then you see it where DFM's stuck in these bad spots. They can use salvos to flush them out, get the kills. Really well thought out, really well prepared are GE for this map.
वन टैप देखना है भाई जी Everyone unscathed here for the moment once again. कोई तो वन टैप दे भाई Forward over towards this A site a bit is DFM. And we're just behind the box, Poppy out wide, ensuring that there's no one working their way over towards this C site. I'm not sure how much that camera can see. Salvo's now back online. The drone to lead. Crystal getting a spot there. Jinbung just going to be bouncing away. Kame looking like he इसका नाम क्या है आकिमी आकामे आकामे Eventually the call will be to pivot. ये Everyone, बैक the जा full रहा है forces of DFM getting gathered up here. Ready to attack. Onto the A site. Might be a pivot towards B if they can break through, but using that aftershock to slow him down. At least want to try to fake the pivot खाएगा here. वन टैप खाएगा एक तो Hadfu now for the moment alone on the site, now dead. जी Bring out खाएगा Yukon, looking for a little bit more. Nearly उसका भी finds हेज himself कितना है elimination. 70%. Shot through, looking for Jinbung, trying to fish him out through that wall, but can't quite find it. Spike is planted. Salvo's too late to get the interrupt in Art now. साइड का कंट्रोल तो आ गया नहीं आया अभी तक See if this plan comes to fruition. We'll be going down through the stairs. Should be able to catch a time. ट्री में फंस गया वो The shots are noted. Now he strikes. Bulldog picked up, but it looks like DFM a little bit more fight left in them. As the time is just not going to be on Global's side. Tap of the spike defuse, just trying to see what they can bait out. Any peaks here. But in the end, DFM just not really giving them anything to work with. कोई ना 1140 तो है DFM will hang around here on Lotus for a little bit longer at least. Yeah, this round, some good calling from Art and DFM. Able to kind of push forward, kind of take their time, keep GE guessing a little bit, show some thought about setting up that B crunch. But it was actually all just trying to open up a little bit of extra space towards A. DFM's able to capitalize on it pretty quick there. May on point with the Guardian. DFM fans over in Japan cheering them on, hoping that they can string some rounds together, maybe get a little bit of confidence at the very least. GE, though, able to mostly buy up here. Still Guardian held over. I think there's some hope. Absolutely. Bring a couple rounds together, extend this map a little bit longer. The analyst has just walked back in and sat down, so that means that now they will have to, wait for 20 plus minutes for their segment to start up. Overtime, please. Would be a hell of a turnaround here. Maze one away from a showstopper. This could funnel this orb to him. Again, it's more about confidence at this point for DFM. Sure, of course, if you were able to run it back and get a win, that'd be great, but that's very, very difficult no matter who you are. And just getting those rounds, we saw it with T1 where you get blown out of the first map. Sometimes just those few extra rounds at the end will kind of carry over into the next map. They did get the orb. Okay, they do have the showstopper for May. So can at least clear space that way. You can see B site left completely open, trying to set up a bit of a fake towards C. No more. Sent that way. G's already there, so. Thorn's Throne destroyed. Thorn's Throne destroyed. May be slowed up here. यूसी होगा हमारे बिंग्स भाई जैसे यूसी default plant coming through DFM. Spike in play. Kelly's lurking around the back. Art once again trying to go for this lurk timing here. Flash not going to connect. They look to double face. Now he knows that he's in a bit of a bad situation, but cannot run away. Faces back in. Ends up along the wayside. A little bit of damage there onto the enemy breach, but kill cannot be found. GN flashed up, tucks back. Salvo's flying towards him. Looks for a little bit more. May with covering fire. Helps to try to keep him alive. Fault line going to be blown out. They're all lined up as Kelly S. will pick up a 3K and get Global up to map point. Yeah, and this is really good stuff from Kelly S and GE. Quickly identifying that Art was going to be lurking somewhere, and they're really diligent about making sure that he's dealt with, because he was hiding over towards C lobby, and they were already kind of thinking about pushing in towards pillars. Yeah, it do be like that sometimes. But I really want to give a lot of credit to the immediate adjustment here, and that shows a lot of great preparation, great understanding, on the fly thinking. Time out लिया last round में. Final timeout, I'm assuming from DFM, to try to see if they can get some more rounds, get something going here on Lotus, but it's tough.
Very much so. A few round wins that we've had from DFM, very much separated. Nothing really consecutive aside from the start of the series, that pistol into the anti-eco. Should be a very calm, cool, and collected little chat here from the side of Global Esports. Miley just telling them, keep up the good work. Patrick, who's having fun? First time on the stage, and they're having a roaring start. Gotta like what you're seeing. A lot of laughs. Obviously, joining a couple other Filipino players on the squad, and they are immediately clicking here against one of the hopefuls of Japan. Trying to find a way, like you saw in the intro video before the game started today, that DFM knows, they're cognizant of the fact that a Japanese team hasn't made a Masters in a very long time. Yeah. They want to try to change that, but this is not the start they were looking for sure. Certainly not. I mean, you already highlighted how important it is, given the group find themselves in. Whichever team is able to find the victory here in the set, it's going to be a very big boon for them moving forward. Tongs fishing here for some wall bang shots. Oh. Managing to get up on top of the box. Lude's taking damage, comes away with that elimination. सी का कंट्रोल तो मिल गया सी साइड का. In control here for DFM. Have the spike plan. They look for a little bit more. Nightfall's going to be sent out over towards Waterfall at the same time. Patrick Koo puts a mask on, goes sprinting forward, identifying two players over towards this water bend. Paranoia crashing across. Gian, however, to win out the fight. The flank is noted, but he still comes away with that kill. Patrick good for one. Now a 4v2. 3v2. It's a 4v2. Salvo sent to just buy a little bit more time, but with 45 seconds remaining on the clock, and Gian still backstabbing. This round is not going to be going the way of Global Esports. It seems this time for DFM, barring a miracle from Poppy, something that he has delivered in the past. It should be DFM clinging to life. Slow push forward, finds that first. Oh, nice. Entry. The transfer onto a comment, you start believing, but still some losses suffered. The money's not in a good spot for DFM, but they critically get the round win. Yeah, they're able to win a huge opening duel there, not suffering any casualties. And GN, this is really important stuff that he's winning these flank battles. Kind of a little Munchkin-esque there from GN, playing the Viper on Lotus, holding that flank. Because if he gives over that kill to Kelly S gets the Rolling Thunder, and that could be a very different round very quickly. And you can see there that, trying to use that Yoru ult to set up for that retake. If you can find that one kill, get another ult going, just end the map right then and there. But DFM's GN comes up big, keeping the B site lurk under control. This time around, he's going to be leading the charge towards A, and DFM, they've seen enough. DFM's like, yeah, we're not going to contest the C side this time. They've solved the riddle. Managed to drift over towards the correct side of the map, so no util, no nothing here for Global on this A site. There's going to be at least, by the looks of it, a 4-man push through that A lobby side. Just a smoke and some salvos were enough for DFM to try something different. The thing is, though, Jeez, मुझे देखनी है. Wait a second. They'll be more than willing to pull the trigger on these ultimates. And it's not a full push across the wall. The player's still going to be locked down here for the moment. It's a good read for DFM. They're going to avoid a lot of that util. Paranoia dodged out there by Jinbung, just able to drift away from it. Push getting ready to come through. Oh, right before the flash connects, Gian. Taking Patrick Koo's head clean off. The re-swing out here, and that's just going to be them lining up. 3 kills here for the side of Jinbung. Kelly S all on his lonesome. Sticking back over here towards stairs. Eventually will fall. Flawless round for DFM. Much needed. As it's 6 to go, 6 tries for Global Esports to bring this map to a conclusion. Yeah, and again, this is about confidence here for the side of DFM, and some good reads from Art in the last couple of rounds. This one, again, the only util that was used off the rip by GE was a smoke in the salvos, and that was enough to kind of let them feel a bit more confident. Obviously GN not receiving any contact, any resistance at all on the A side at Rubble also made it a little bit easier. Kind of lean towards that direction, going up against that eco. This time, though, the Rubble control will be contested. Art, absolute lunatic. Yep.
TP's forward, he's here within the smoke. Kelly S just watching, waiting for the exit. It's like Art wanting to just try to wait and see for it to dissipate, but the timing, the bait on the Prowler is actually gorgeous. Very well set up. Kelly S on the floor once again. That Rolling Thunder not going to be utilized here in the round. There's method to the madness for Art this time. Great combo again. Reminiscent of some of what we were seeing early on for DFM. And a bit of a spread now for GE, but they're really leaning towards B. They seem to feel pretty confident because Yudotan has been watching Mound and hasn't really seen much. They can lean in this direction. Poppy right around the corner, gets identified. Oh, bhai. Despite being caught up in the tripwire, still able to find a shot. Crystal finding it, the trade there, but Jinbung is catching Yudotan on a bit of a linger. Dead at the door switch. And now the C site wide open. And for Patrick Hu and Crystal, there is no other recourse but to sit back and save. Yep, 100%. Nothing else to do there. Yeah, a couple just kind of wild plays from DFM. The early TP from Art. Getting Akame to come and help. Getting that kill. And then May just sending it in for the cause there. Gets another kill, and that's enough to break open enough space on the map to get the plants, and you win the fight towards C Mound. Good to go. So DFM starting to kind of work the map a little bit, starting to get some good reads on this GE defensive setup. Gotta wonder if, you know, sitting on 2 timeouts, you might as well pull the ripcord on one of them. Yeah, about to go into, you know, 2 right. We'll see if anybody else really puts any impact behind their purchases, but there's 2 rifles carried over. The rest going to be on a bit of an eco here. See if they opt to go forward right here, right now, or if they maybe delay, wait for another full purchase. Either way, I don't think that they would mind it too much. DFM now winning 3 in a row off the back of their own timeout, but it seems like the timer is going to continue to tick down. Okay. Showing some trust. I mean, in general, I've been super impressed with Kelly S on this map. The way that he is calling for GE has been really, really good. He has mostly been ahead of the curve. So I also want the team to be able to make these pivots and, you know, suss things out on their own. That's true. Especially now that you've got a new player coming in, you know, you want to get them comfortable with each other, being able to communicate in the heat of the moment. 100%, I like it. Oh boy. Looking for a bit of a crunch play here. 3 players still on the approach from Mound. Jan some shots through the smoke to just try to fish for anything that he can get. Flash over, disconnect. Patrick Hu able to find one. Crystal find another. Poppy with a headshot onto Art, and suddenly the round. Oh bhai, gaya round जीत गए. Gonna be dodged out, but the spike is absolutely stranded. So deep into the spawn. And this is noted for DFM. Is this how it ends? Is this how this map comes to its conclusion? खेलेगा. Well, you got to send Jinbung trying to create that flank angle so you can actually get to this spike. Poppy so aware of it, already holding. And this is, there's still some time. GE doesn't need to move a muscle, just need to hold their angles. And instead, they're going to double up on this B push. Try to see if they can take Poppy out. Starting to make some noise here. Jinbung eating a bit of damage. Kelly has 5 HP, but on this deep line of sight angle as the swing out is good. And just like that, Global Esports will show why they did not need a timeout. GG. A crunch play that goes sideways Nice one. for DFM. 13-7 is the closeout as Global Esports win their map pick a Lotus. Yeah, a lot to love here from Global Esports. The composition with the agents looking really cool. They've got some great ideas with some of the combos with the ultimates and the utility and those kind of things. Some great play calling. Patrick Hu came out, had some really impactful first kills for them. That's exactly what you need out of your duelist. Comes in, doesn't look like it mattered too much that he wasn't there for kickoff. Seems like they're integrating him very nicely. DFM, on the other hand, looked good at the very beginning.
Hmm. Nah. Hmm. बताओ बे चैट क्या सीन है. Oh my god, Yudatan's unbelievable. Papi's clutching every round. But later on, especially in the tougher games, in the game that they lost, that split game that they lost against DFM, थोड़ा फेस I पे think वॉक करो Kelly is one of बस. those players that I see him get involved in the mid-round, get active, and have some impact and multi-frag from the IGL position. I think that's a fantastic point. Kelly, yes, of course, is doing a lot of the calling and a lot of great calling. Yes, DFM weren't looking their best, but I'm pretty sure a lot of those calls were
capitalizing on exactly that. Just keep hitting A. They have not figured it out, and they're just looking a lot better, a lot more complete. I think we saw glimpses of this, like you said earlier on in kickoff. I don't know if it's simply the addition of their original roster being in its full force, or if it's something else that they've been working on in the outseason. Would you say that might be a bit of a copy-paste approach from the GE coaching staff, perhaps, that they're just continuing to go over and over again? You know, not crazy original ideas, perhaps. No, for real, I like that. I mean, you don't need it. If it works, it works. Yeah. Yeah. This is great now. Rate. And now going into Pearl as our second map with DFM. As Achilleos had mentioned, the last time we saw DFM play on Pearl, it was a 13-1 against Paper X of all teams. So this is very promising for DFM, but based on what we just saw, based on what we saw from Global Esports, I don't think this is going to be the same scoreline coming in for this second attempt at Pearl. The thing I want to say about DFM is that was a fantastic game against Paper X, don't get me wrong, but at the same time, I've never seen Paper X look so lifeless, and the game before that was the complete opposite from DFM. Yeah, like, the consistency on this map is not really there. They went from playing that ISO Yoru comp that I did not think was good to actually going into what you see in the second comp. That was the more recent one with the Teo KO that looked really, really good against PRX. So we'll see what they prepared here on Pearl, but, you know, they've been a bit up and down, and you can see GE, they've got a dub on this map. They've played it a little bit. Also, I think with DFM, like, when they managed to beat Paper X in that dominant fashion, they just won map 1 before that, right? They suddenly had all the cards. They were able to play with all the confidence, but now the shoe's on the other foot. They just kind of got slapped on map 1. So being able to bounce back is very important, but I wouldn't expect that kind of dominant scoreline. But again, they've picked this map for a reason. We have to believe that they have ideas. I'm curious to see if they're going to change that composition or not. You're going to see GE shuffle something again, because a lot of this is kickoff data. They've changed roles. They're probably going to change up the comps a little bit, as you already saw on Lotus. So you're not really sure what exactly you're going to expect from them, at least looking at the officials. I'm sure that, you know, DFM is going to have some idea from what they've been playing in practice and all of that kind of stuff. But I totally agree. I think for DFM, that free flow game that you got from kickoff is not how they stepped into this game. They've looked very slow, very sleepy today, and I already said it earlier in the pre-show. This is the game that these two teams need to win against each other to make the rest of the group go well. If you just have a slow start to kickoff and DFM is forced to try to make some upsets happen against some of the more difficult teams in the group, they might not be going to playoffs, guys. After a really nice performance, 5th, 6th over in kickoff, they might just go straight back to where they were. Yeah, fantastic point. This is a very critical first match of stage 1 for that exact reason. This is going to carve the rest of your pathway over the next 2 months. And you guys put them, you put Global Esports, DFM kind of close together, almost in the A-B range here. Does anything change here, or do you think DFM might be waking up? Do you want to give them a second chance? I mean, the series isn't over. We can't move them before the series is over. I mean, my advice to DFM right now is wake up, guys. Come on, adapt. Stop playing the Valorant, guys. Wake up. They already know. Like, that's exactly what they're saying. Like, we've all had games like where you're in the coach position and you're watching your team go through the motions. That is exactly what that was from DFM, and it's a really frustrating thing when it happens. Yeah, I felt like they weren't adapting at all in that first map. I felt like GE used their ideas again and again and again, and just DFM Even when you went to the comms, like Akami made that big play, and then we got the player comms, and they were like, nice guys, where's the energy? Against PRX, we're like, yeah, we're the best! Stand up, throw your monitor, get involved. That's what I want to see. Oh, don't throw your monitor. We do not need a tech pause. I don't want a tech pause. But you're right, we need that energy. The same energy that we saw them walk out on stage with. Yeah, exactly. Like, maybe they didn't have the blow-up toys this time, so, like, I don't know. Honestly, that throw your monitor comment reminded me of those, like, you know, Insta posts where it's like, you don't want to go to work today? Just throw your monitor at the other team. They can't ask you to come. You do not have to work today. Here we go, though. DFM, they're going back to Yoru mixed in with a chamber. So they've changed quite a lot. It's going to be a multi-centi comp. It's going to be a little bit of a slower style that you've been seeing. You're going to have to rely a lot more on that Yoru for the entry power, but also playing a bit more of a pseudo init because they are just playing the Sova instead of like a double init style that's a bit more flexible. Yeah, I mean, I think this chamber's obviously going to want to get the op out, right? That's a huge part of the game plan. GE don't have too much to force it off apart from that Sova, so they need to find answers there. Well, let's see if DFM can stay in the game or if GE is going to get the 2-0 to start off stage 1. We're going to send it back to our casters, Achilleos and Paper, then, to take it away.
Thank you very much. Let's get ready to jump into Pearl. I think the one thing we can all agree on is, yeah, that 13-1 scoring line not going to be something that DFM is likely able to achieve. Second match start होने वाला है guys. Global esports, but maybe since they Let's go. they're not going to get that again. Yeah, they can get 13-0. Yeah, that's on the cards, right? Sure, why not? Yeah. I mean, I'm all about it Very if it happens. I'm quite curious about DFM coming into this map because this is a very different comp from what they ran against Paper Rex when they 13-1 them. There's no Tejo in here, for example. The other thing is, this is G2's comp. This is literally the same comp that G2 uses on this map. And so you need to rely on players like Akame to do their best Leaf impersonation, shut things down with that chamber, be really proactive on watching the flanks, taking mid control if they're going to try to mirror that in any way. Because that's something that G2 does super, super well with this composition, is they're really annoying on this attacker side, trying to lock down mid, and you can see he's already trying to get ahead of it. There's a spot on the Patrick who, there's a flash waiting for Jinboon over towards mid, but they're already out of it. Scaled quite far forward there in mid. Still able to back away. He's getting tagged up, avoids getting taken down here. Couple share of shots out. Patrick who is down so very low. 8 HP now remaining. Solid damage, but still an opportunity for Patrick to find some impact here in the round. That's opened up the orb at the very least, though, for DFM. Now they're going to seemingly set up for the beat crunch. Although GE has an okay read on this. Trying to play into the smoke, trying to catch DFM off guard, but they paused. They're waiting for the reinforcements. Good shot from May. Finding himself all three Oh, players here on this B site. Knocks him to the floor. The rest of the team wraps around through the connector. Spike now planted. There's Yudotan and Poppy. Try to see if they can do some damage and turn this back into their favor, but a 2v5, quite a bit to ask. Even if it is from these. Oh, shot, babe. On the corner, snappy with the first shot. Doesn't manage to find a Kame. Chamber on the floor. How much more do you look for before you call it quits and just look to try to die to the spike? Jinboon going to be noted here at Halls, just playing ring around the Rosie, not wanting to give him the opportunity as Yudotan does get tagged up here. Jinboon able to go ahead and snap Oh, on. NT. Pushes forward past screens, gets himself a 4K, and DFM get another pistol round win. It is really funny to me because this is G2's comp, and DFM is already kind of playing it like they do on this attacker side. They're very patient, they're very methodical. I mean, obviously it helps when May is just doing that. Pretty impactful stuff, but another thing that G2 does really well in this composition is they're really ready for trap plays. They're really ready for their opponents to try to catch them a bit off guard, and so is DFM. So tip of the cap, able to win another pistol round there. Gonna be the outlaw for Akame. Mobile little recon. Intentional or not. It's cheeky to say the least. GG लग रहा है ये Good मैप to be noted there at A main. जी के लिए. Similarly to what we were seeing on Lotus, just looking to very much play this death ball style. So 4 players clustered up on this A site. Poppy on his lonesome. Over here at B at Halls. Yeah, and that outlaw so good on rounds like this about making sure that अबे हिंदी flanks are करते हैं बे. controlled. No kind of cheeky lurks are. ये हिंदी वाला है. Waiting for any kind of हिंदी वाला contact. किधर गया बे? Gonna try to squeeze Poppy out. He's just gonna slide back in towards the defender side. अरे मेरे ही चैनल में तो है. And, yeah, should be kind of a patient. Just like, subscribe करो guys. दिया है जी ने, मिड पे भी उन्हें कोई दिखा नहीं, तो मालूम है कि बी पे अटैक होने ही वाला है. पापी फाइट नहीं करेंगे, मालूम है कि क्लासिक के साथ ज़्यादा कुछ नहीं खाट सकते. So he's just gonna try and keep himself alive, hope कि सारे जी के प्लेयर्स नंबर्स लेके आ जाए और फिर एक साथ रीटेक के लिए जाए. इनफैक्ट इस बार तो मुझे लग रहा है कि शायद वो रीटेक के लिए जाएंगे भी नहीं, वो बस स्पाइक से अपनी जान गंवाएंगे. Don't give any more ult points to DFM.
May already काफी close है, 3 points away from his dimensional drift. बाकी सारे players तो भूल नहीं पा रहा वो ट्रिपल टैप विद द शेरिफ भाई पिछले राउंड में जो आपको देखने को मिला। कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। रात को आपको नाइटमेयर्स आएंगे उस ट्रिपल टैप के बाते में। I mean, सोचो ना किस तरह से लाइक जी ने बोला कि हाँ यहाँ पे हमारे पास मैन एडवांटेज रहेगा, सिर्फ 2 प्लेयर्स है ए बिन पे, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी, 3v2 अपन ट्रेड्स निकाल लेंगे, लेट्स अटैक देम, लेकिन मैं अकेले ही उनको खा गए। व्हाट अ स्टाइलिश वे टू स्टार्ट द गेम। यस आपने प्रेडिक्ट किया था। वेल ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स स्पाइक से अपना जान गंवाते जरूर है। डीएफएम के 5 के 5 खिलाड़ी इनफैक्ट सारे के सारे खिलाड़ी अपने वेपन्स को रिटेन करेंगे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। आई मीन स्टोरी लाइन सिंपल है। पिछली बार क्या होता है भाई का मैप चल रहा था, पहले अगर स्पाइक पे मर जाए तो दे दिए थे डीएफएम को, दे दिए थे मतलब हार चुके थे। इस बार भी वैसा ही एक भाई कितना आगे मॉनिटर है भाई। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इस बार कमबैक कर पाएंगे बिकॉज़ इस बार इट डज नॉट सीम टू बी एज क्लोज। ऑफेंस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का उतना खास कुछ रहा नहीं है, डीएफएम को उतना खास कुछ शट डाउन कर नहीं पाए। हाँ जो ऑफेंस था वो मेन ट्रिपल टैप मार के शट डाउन कर दिया। मिड पे एटलीस्ट पुश हुआ था पिस्टल राउंड, शॉट नहीं लगा। ओ ओ ओ केली हेलो क्या बात। आई थिंक वहां पे क्रिस्टल ने अपना जो रिकॉन डाला था उससे कोई स्पॉट नहीं हुआ, इसलिए केली इतना केयरफ्री होके और लेने जा रहे थे। ही इज लकी टू बी अलाइव राइट नाउ। आउटलॉ की 1 बुलेट करंट हुई, 10 एचपी पे सर्वाइव करेंगे वो दोनों है। ओ वेपन्स है मौजूद डीएफएम के, इस ऑफेंस को उनको पहले फिगर आउट तो करना पड़ेगा। देखिए 3 खिलाड़ी है साइड पे, पापी मौजूद, पहला ऑफेंस, एक फ्लैश आता हुआ डीएफएम की तरफ से, एक डीकॉय डाला जरूर था। अभी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल को कितना मिलेगा वो देखने वाली बात है। उसको पता नहीं है भाई वो बॉक्स के पीछे एक है। शायद अभी इंफॉर्मेशन रिलीज किया जाएगा कि शायद एक ए हिट हो सकता है। क्रिस्टल पापी अभी भी मौजूद, 8 को स्पॉट करेंगे बट वो बस था वाइस वॉल को बेट आउट करने के लिए। बट डीएफएम धीरे धीरे करके 8 से यहाँ पे अपनी जो प्रेजेंस है और ज्यादा बनाती हुई इस बार फाइनली एक फ्लश आएगा। हाँ लेकिन देख लीजिए कितनी ज्यादा खतरा के डीएफएम कदम रख रहे हैं साइड पे। उन्हें मालूम है कि जी के ट्रैप्स यहाँ पे तैयार रहेंगे, ट्रैप्स तोड़ने के लिए प्री फायर। ओ भाई क्या रिफ्लेक्स है भाई, टाइमिंग। मार गिराएंगे उनको, क्रिस्टल को भी मार गिराया। ट्रिपल फ्रॉम जिनबोंग, मैसिव हीरो परफॉर्मेंस, गेट्स देम द साइट, गेट्स देम द प्लांट। एंड गेन की तरफ से ऑलरेडी बैक स्टैब आ चुका है। फ्लावर पॉट पे ट्रिपल किल मिलने के कारण उनको वहां पे फ्री कंट्रोल मिल गया और वो घूम के आ जाएंगे। उड़ान डिटेक्ट हो चुके हैं विद दैट वाइस फॉल एंड दिस इज द कॉल टू सेव ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। बार-बार रिकन्फर्मेशन करने के लिए उनने कितनी यूटिल डाली, पहले क्रिस्टल का ड्रोन, फिर उनका रिकॉन, वो स्पॉट आउट कराने के बाद भी जी को पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था कि यहीं पे ए हिट आ सकता है। एंड क्यों ही यकीन करेंगे, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक डीएफएम आर कीपिंग द पोजीशन अ बिग सीक्रेट राइट। उनने काफी ज्यादा नॉइज किया था, योरू के यूटिल 2-2 बार भेजे, फिर ड्रोन से भी वो स्पॉट आउट हो गए। सो इट्स लाइक डीएफएम आर नॉट डूइंग इनफ टू अवॉइड द जी यूटिल। एंड जी वाज लाइक यार अगर वो इतना खुले तरह से आ रहे हैं, हमारी यूटिल डॉज नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं कर रहे, तो मतलब ये फेक हो सकता है जी। इसलिए जी के भी रोटेशंस यहाँ पे टाइम पे नहीं आए, लेकिन इट वाजंट अ फेक, इट वाज रियल। डीएफएम जस्ट डोंट केयर, दे लाइक हां ठीक है आपने हमें देख लिया ना, देख लो भाई क्या रिफ्लेक्स है भाई। देखने के बाद फाइट भी कर लो। एग्जैक्टली राइट। जस्ट फिनिक्स जिम्बोंग यहां पे घूम के 180 फैंटम का भाई अलग ही सीन है। हर बार उनके बैकलाइंस पे एक ना कोई खिलाड़ी हमेशा मौजूद रहते हैं। इट्स ऑलवेज गोना बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू काउंटर दैट। रोटेशन जैसा आपने बताया ठीक टाइम पे नहीं आए थे, बट इस बार ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अपनी पूरी की पूरी जो रिसोर्सेज, अपनी स्ट्रेंथ है वो ए साइड पे रखते हुए चारों खिलाड़ी और पापी अकेले बचेंगे यहाँ पे बी साइड पे। एक बार फिर से डीएफएम का यहाँ पे पलड़ा भारी। एक बार फिर से डीएफएम कांटेक्ट प्ले के लिए नहीं जाएंगे, वापस से अपनी यूटिल दिखाएंगे एंड अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। सोवा का क्लोन बी मेन पे स्पॉट किया गया, योरू का क्लोन स्पॉट किया गया। डज जी मूव आउट ऑफ इट? नो दे डोंट, दे डोंट सी एनीबॉडी, दे रीक्लियर इट देमसेल्व्स। सिर्फ तभी जाके उनको यकीन होएगा कि हाँ बी पे चलो ये लोग आ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से जी के पास वेपन्स नहीं है, सिर्फ वो एक हीरो वैंडल जो उड़ान ने पिछले राउंड में सेव की थी वही है। तो वो वैंडल के साथ उड़ान अपनी टर्रेट एंड अपना वाइस फ्लैश लगा के ए पे खड़े रहेंगे, जबकि बाकी सारे जी प्लेयर्स बी पे ऑलरेडी गार्ड तैयार है उनका। चलिए इस बार एटलीस्ट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का रोटेशन
तो आ चुका है टाइम पे, बट स्टिल इट डज नॉट मैटर। मैं एक बार फिर से पैट्रिक को शट डाउन Oh, करना nice होगा। shot. केली एस एक बहुत टाइट Nice पोजीशन पे shot. मौजूद है, क्रिस्टल Oh, के सहारे 3 बहुत क्विक एलिमिनेशंस यहाँ पे। nice shot. Wow. केली ने तो पूरा Yes, with the triple kill, शेरिफ इस मैच पे बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहा है। बीट फ्रॉम DFM, बीट फ्रॉम ग्लोबल esports, और इस बार शायद एक 50 के लिए जाने जाएंगे। अकामे अकेले खिलाड़ी है जरूर उनके पास for Marshall, but it's not gonna be all that useful. They get shut down. Global esports, they get there first. Yeah, बेचारे पैट्रिक के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। रिकॉल रात को टाइम पे तोड़ नहीं पाए तो उनको तो स्पैम में ही मार गिराया गया, लेकिन जैसे ही स्मोक के थ्रू बाकी के प्लेयर्स निकले, यू हैव केली एस प्री फायरिंग एवरी कॉर्नर, और केली एस को फोकस करते करते सारे के सारे प्लेयर्स उनको पीक्स दे रहे थे, भूल गए कि क्रिस्टल भी वहीं पे मौजूद हो सकते हैं। तो एक बेट एंड स्विच सेटअप यहाँ पे लगाया क्रिस्टल और केनी ने, दोनों ने मिला के, और उन दोनों की शेरिफ्स ने तबाह कर दिया डीएफएम को। जो मे ने उनके साथ किया था वही चीज केली और क्रिस्टल ने मिलके डीएफएम के साथ की है। बदला लिया है वो पिस्टल राउंड के लॉस का एक थ्रिफ्टी के साथ। और इस बार डीएफएम फाइनली स्प्रेड आउट होते हुए, अब तक तो उन्होंने कोई भी स्प्रेड आउट करने की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ 5 मैन पुशेस कर रहे थे, वो भी स्लोली, वो भी ऐसा भी नहीं कि तुम कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, जस्ट वॉक अप, राइट, वॉक अप ब्रेवली। फाइनली दे स्प्रेड आउट, जिनबोंग को स्पॉट कराया है बी पे। यू हैव द योरू एंड द सोवा आल्सो थ्रोइंग द यूटिल ऑन बी मेन, ताकि जी के सारे प्लेयर्स स्प्रेड आउट हो जाए। लेकिन देख लीजिए इस बार 8 के लिए तैयार है जी। ड्रोन से जानबूझ के स्पॉट किया गया, अकामे छुपे रहे, दे डेलिबरेटली रिवील्ड जस्ट आर्ट हिमसेल्फ ताकि वो बेट आउट हो जाए एंड अकामे कुड गेट अ फ्री किल, लेकिन वो फ्री किल उन्हें नहीं मिला। अब सिर्फ प्ले बनाने के लिए योरू मौजूद है, मे यहाँ पे फंस चुके हैं, उनका टेलीपोर्ट कहाँ पर है? Does he even have a TP? Yes, he does. A main पे निकल जाएंगे, but he gets absolutely no actionable info with this one. उन्हें जी के जो 2 प्लेयर्स को 8 पे स्पॉट किया था, वो दोनों प्लेयर्स ने रिपोजिशन कर लिया है, एंड नाउ द होल गेम हैज बीन रीसेट। लेकिन क्रिस्टल ओवर एक्सटेंड्स। Oh boy. केलीएस थोड़ा सा शट डाउन करेंगे, ही डज ब्रिंग डाउन द लॉसेस, बट स्पाइक प्लांट हो रहा है, कंट्रोल साइड का अभी तक मिला नहीं। एक फ्लैश के सहारे यहाँ पे ग्लोबल esports फ्लैश आउट करेंगे। केलीएस पॉपी so successful. Kelis once again Oh shining bhai. bright. Draw comes in from this man. He's absolutely unstoppable. 7 kill already. 4 थर्ड मैप kill नहीं पे। जाएगा आई और थिंक। आप देखिए ग्लोबल esports क्या ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक और राउंड अपने खाते में करेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के तहत यहाँ पे जीत हासिल हो जरूर रही है, बट मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंसेस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं पूरी टीम के मोरल को बूस्ट अप करने के लिए। The S in KLS stands for smart, it stands for sexy. क्या ही रीड थी उनके तरफ से, उनने ये वन वे स्मोक के अंदर खुद को छुपाया, and he comes out the moment they start planting. जैसे ही क्रिस्टल वहां पे मारे गए, उन्हें मालूम था कि DFM प्लांट करने के लिए आएंगे, 2 प्लेयर ए मेन से फ्लावर मार्क करेंगे और बाकी प्लेयर्स जो आर्ट पे थे वो सिर्फ कवर करेंगे प्लांटर को, एंड वो आर्ट के प्लेयर्स कवर नहीं कर पाएंगे अगर वो स्मोक के थ्रू पिक करेंगे। एक छोटी गैप थी DFM के अटैक में, उसको ही एक्सप्लॉइट किया गया। ओहो, लेकिन क्रिस्टल एक बार फिर से मारे जाएंगे। जंप स्पॉट करने के चक्कर में दूसरी बार उनका सामना हुआ है मौत के साथ। Very early elimination. Yeah, this is getting unlucky. Actually, I can't even call this unlucky. This was an unforced error from Global Esports. अकामे की ऑपरेटर पोजीशनिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इनफैक्ट ही हैज बीन वेरी एक्टिव ऑन दैट ऑफ। अभी फिलहाल के लिए मिड कंट्रोल लेने की कोशिश है जरूर, बट आई बिलीव उसको काउंटर करने के लिए केलीएस फोर्स आउट किए, बट यही एक चीज थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। इंफॉर्मेशन था नहीं कितने खिलाड़ी थे मौजूद, और उसके सहारे यहाँ पे ओवर पावर हो गए, ओवरलोड हो गए, शॉट्स मिस करेंगे अकामे, बट नहीं, 8 नहीं छोड़ेंगे उनको। ग्लोबल esports बैकफुट पे है जरूर। 2v4 के सिचुएशन, पैट्रिक ऑन द ऑपरेटर शायद सेव करना चाहेंगे। क्रिप्स, क्या लगता है आपको? हाँ, सेव तो शायद आ ही जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे ग्लोबल esports की तरफ से। केलीएस फ्लैश करके पीक करना चाहते थे थ्रू दैट स्मोक, लेकिन वो अकेले चले गए। उदुतान ने उनके साथ डबल पीक नहीं किया। अगर वो टाइमिंग पे आ जाता पीक तो शायद इस राउंड का आउटकम बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता, लेकिन फिर इवन दो उदुतान मिस्ड दिस टाइमिंग, उन्हें बाद में somehow I don't know why, but to overcompensate, शायद overcompensate करने के लिए उन्हें रीपीक किया अकेले, एंड इसी के साथ केलीएस उदुतान दोनों ने ही अपने फ्रैग्स इंडिविजुअली गवा दिए। क्रिस्टल ने तो अपनी जान राउंड की शुरुआत में ही गवा दी थी जंप स्पॉट करने की कोशिश में। I mean, I can
can understand why he went for the jump spot. You know, उनके teammate already जो ये aim in का wooden box है वो already cross कर चुके थे. So he's like, okay, अगर crossing में किसी ने उन्हें नहीं पकड़ा है, तो शायद I can also go for this, and he gets punished. Plus you have to give credit where it's due. Akame के reflexes बहुत ही sharp. Lotus में उन्हें एक दो गलतियां की थी with the fade, लेकिन इस बार इतने सिंपल जंप पी को भी उन्हें पनिश किया बहुत अच्छे से. जिनबोंग पूरी तरह से फ्लैश नहीं हुए थे. The flash was a little too high for him. दोनों बार यहाँ पे टाइम आउट लिया किसने लिया? जी नहीं है लाइक तरीके से आकामे ने यूटिलाइज किया. बट वेरी सरप्राइजिंग कि इस बार डिफेंस में पैट्रिक हु जो है उनकी ऑपरेटर अभी तक चली नहीं है. इंस्टेड इट्स अटैकर आकामे जिनका ऑपरेटर फिलहाल के लिए घातक साबित हो रहा है. पैट्रिक हु को रिपोजिशन करना पड़ेगा. बार बार वो बी साइड को नकार रहे. DFM दे आर नॉट गिविंग अवे देयर अर्ली कॉन्टैक्ट्स ऑन टुवर्ड्स द बी साइड. उनको पता है कि शुरुआती राउंड्स में ए पे प्रेजेंस देंगे, मैन एडवांटेज क्रिएट करेंगे और मिड से फ्लशिंग कर रहे हैं अगर उनको बी साइड हिट करना है. दे फाउंड आउट द परफेक्ट काउंटर फॉर पैट्रिक हु. बट इस चीज को ग्लोबल स्पोर्ट्स को रिवर्स काउंटर करना है. द ओनली वे इज पैट्रिक हु टू रिपोजिशन हिमसेल्फ एंड मेक हिमसेल्फ अनप्रेडिक्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम. और मुझे लगता है कि शायद इसी चीज के बारे में बात करते हुए कोच टाइम आउट में जी हाँ, टाइम आउट में किसी तरह तो ग्लोबली स्पोर्ट्स को वो चीजें अनप्रेडिक्टेबल बनानी है. जिस तरह से KLES ने वो टाइमिंग पकड़ी थी जहां पे उन्हें क्वाड्रा किल मिला, उसी लेवल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और मिनी प्लेस ग्लोबली स्पोर्ट्स को बनाने पड़ेंगे. वो मिनी प्लेस काफी अच्छे थे क्योंकि DFM की सारी यूटिल ऑलरेडी बेट आउट कर दी गई थी. एंड फाइनली व्हेन दे केम टू प्लांट, जी वर रेडी विद द ट्रैप. इस बार तो जी ट्रैप सेटअप ही नहीं कर पा रही है कि DFM स्टेप इनसाइड इट. कीप इन माइंड जो 2 राउंड जी जीती है, दे वर ऑल ट्रैप प्लेस. पहले वो शेरिफ के साथ थ्रिफ्टी एंड देन उसके बाद KLES से वो क्वाड्रा किल. इट वाज ऑलवेज ट्रैप प्लेस दैट वर्क अगेंस्ट DFM. बट अगर DFM अंदर ही नहीं आएंगे, साइड के बाहर से ए मेन से ही लॉन्ग रेंज डुएल ही जीत के अगर वो जी के सारे ट्रैप्स तोड़ देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे. या दैट्स वन कूल थिंग आई लाइक अबाउट वाइस. ये वॉल जो है वो शॉक डार्ट से नहीं टूटेगी. ये वॉल किसी से नहीं टूटते. या ये शॉक डार्ट्स तो जो जनरली यूज किए जाते हैं वो किलजॉय के सेटअप को तोड़ने के लिए किए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे किलजॉय का सेटअप इस बार बी पे मौजूद है, तो उदतान भी काफी बार अपने सेटअप चेंज कर रहे हैं. यू नो, कभी 8 पे लगाएंगे, कभी डबल डोर. इस बार उन्हें बी मेन पे लगाया है. हाइलो सेटअप था यहाँ पे मौजूद. आप देखिए DFM के ओह नाइस शॉट. करते हुए 3 खिलाड़ी बहुत फास्ट एक एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा. बट ए साइड पे उनको मिलेगा 3 खिलाड़ियों का स्टैक. This is going to be a proper 3v3 और यहाँ पे आकामे भी मौजूद साइड के बाहर. So this now becomes a 4v3. Global Esports ओ हो भाई केली किल बहुत क्विक उनको मिला जरूर. और क्रिस्टल इस बार पीक नहीं करेंगे. इनफैक्ट पीछे से उनकी अल्टीमेट के सहारे कुछ खास हासिल करने की कोशिश. मिला कुछ नहीं बट एटलीस्ट साइट एडवांटेज उनको बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है. ओह बच गया. नो मैटर व्हाट हैपेंस, अगले राउंड में भी अकामे के पास अपनी अल्टीमेट तो रहेगी. Obviously he will try to save the op as well. लेकिन 10 सेकंड बचे हैं. आई डोंट थिंक अभी कोई इन्हें हंट करने जाएगा. जीई भी हंट करने की किसी पोजीशन में है नहीं. उनके पास पैसे इतने नहीं हैं. They will want to keep the money alive and yeah, DFM can still buy. You know, उनके पास अभी भी 4000 3000 क्रेडिट्स बचे हैं हर प्लेयर के पास ऑलमोस्ट. तो एक और बाय तो निकल ही सकता है इनका. प्लस अभी इनके पास बड़े-बड़े अल्टीमेट्स आने शुरू हो चुके हैं. स्की गार्डन, हंटर्स फ्यूरी, कॉस्मिक फाइट, तीनों तैयार है DFM के पास. आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट अल्टीमेट राउंड होने वाला है DFM के लिए. बिकॉज धीरे धीरे ग्लोबल esports जो कर रहे हैं वो बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं. वो इस मैच पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं. जब आपके पास इतने हैवी अल्टीमेट्स मौजूद है, स्पेशली समथिंग लाइक अ स्टील गार्डन, यू कैन लॉक आउट दैट साइड. ग्लोबल esports को काउंटर अगर करना है तो फिर साइड के बाहर जाना पड़ेगा. बट साइड के बाहर जाए तो कॉस्मिक डिवाइड आ जाता है. सो इट ऑलमोस्ट सीम्स इम्प्रॉबेबल एट दिस पॉइंट. बट अगर यहाँ पे पैट्रिक हु का ऑपरेटर चलता शायद स्क्रिप्ट में बदलाव हो सकता था. बट वो हुआ भाई किसी का भी ऑप नहीं चला. दो शॉट्स मिस किए पैट्रिक हु पे. और उनका तो डैश भी गलत हो गया था. डैश गलत, अपड्राफ्ट गलत. पता नहीं कैसे बच गए. जान बची तो लाखों पाए. लॉर्ड को पैट्रिक हेवन पे आए. भाई हिंदी पे ये तो सिद्धू पाजी लग रहा है. एक्टिवेट किया जाएगा काउंटर करने के लिए 8 का हंटर्स फ्यूरी एंड ही क्लाइम्स अप. व्हाट? जिनबोंग लॉन्ग रेंज क्लासिक शॉट. आई एम प्रीटी श्योर कि एक और प्लेयर ने उनको मारा रहेगा यहाँ पे. अकेले
तो वो इतना जल्दी मारे नहीं जाएंगे। ऑफ का शॉट आया था ऑफ। दूसरा कॉस्मिक डिवाइड, द होल साइट इज नाउ इन अ क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस की अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए डीएफएम कैसे कैसे धीरे धीरे अपना दबदबा बना रहे साइड के अंदर। कॉस्मिक डिवाइड के सहारे सारे के सारे ग्लोबली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को लॉक आउट किया गया है और डीएफएम डिसिप्लिन्ड है, उनको पता है एज सून एज द कॉस्मिक डिवाइड गोज अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्रिस्टल ने दो निकाले बट में शट्स डाउन पैट्रिक हु। 2v3 का ये फाइट अब। ये स्मोक इन्हें बहुत ज्यादा कवर देगा, रिकॉन डॉट तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रैग्स मिल सकते हैं फ्री के। वो नेवर माइंड एक काउंटर स्मोक डाल दिया है वहां पे कवर करने के लिए, लेकिन वो फ्री फायर फिर भी बहुत अच्छे से काम आ रही है। क्रिस्टल को एक ऑलमोस्ट निंजा सिचुएशन निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। स्मोक फेड होने वाला है, नो मोर कवर लेफ्ट फॉर हिम, barely any bullets in the chamber और वक्त निकल गया है। This is a definite round for DFM. And it is. कोई ना 2 राउंड ही आ गए यहाँ पे DFM को, and of course बहुत सारे भारी भारी अल्टीमेट्स यहाँ पे यूटिलाइज किए गए थे। 3 अल्टीमेट्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, क्रिप्स, द हंटर्स फ्यूरी, द कॉस्मिक डिवाइड एंड द स्टील गार्डन, तीनों कमिट किए गए इस साइड को कैप्चर करने के लिए। बट स्टिल एक खिलाड़ी डटा रहा, वो था क्रिस्टल फ्रॉम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। और मुझे लगता है कि यही एक जज्बा जो शायद ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को इस गेम के अंदर रख रहा है। बार बार हम देख रहे हैं जब डीएफएम अपनी टीम प्ले के सहारे एडवांटेज बना रही, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, they managed to shine somehow or the other. पैट्रिक को इस बार वापस एग्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डीएफएम पूरी फायरिंग स्क्वाड लेके तैयार है मिड पे। He's ready for the re-engagement. This is just ballsiness now. Bit control give up कर दिया है जी ने। Reposition करेंगे वो खुद को 8 पे, 1 and 1 positions पे। ओ, उदतान अभी भी काफी एग्रो खेल रहे हैं। उन्होंने वो क्लोन को नहीं मारा है, तो मेरे को अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे कोई हो सकता है। पैट्रिक को क्लाइंब अप करते ही उनको खतरा रहेगा, लेकिन वो खुद खतरा है। He is the danger. He is the one that knocks. Wow. Walter White. Let's see who is gonna be next. He is खेले को अभी अगला शिकार कौन होने वाला है। सारे के सारे खिलाड़ी यहाँ पे ए साइड की तरफ जाएंगे जरूर, बट ये वाइस वॉल इस बार बहुत आगे सेटअप किया गया था, जिसके चलते डीएफएम को अंदाजा तक नहीं लगा। बेट आउट हो गए, फ्लैश आउट हो गए, केलीएस इज इन पोजीशन। और सरप्राइज की बात ये है, चौंकाने वाली बात ये है कि अभी तक खाएगा 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 हुए जो डीएफएम एक्सपेक्ट नहीं करी। एक और किल मिला उनको, जिम्बोंग, जिनका नाम लिखा हुआ था। नाइस शॉट। Shut down, beautiful stuff. Global esports दबदबा अभी भी मौजूद। ऑपरेटर है जो शायद सेव करने की कोशिश की जाएगी, और इस बार मुझे तो लगता है कि मे फॉल बैक करेंगे, या फिर नोइंग में शायद नाइस वन। जा सकते थे, बट दिस मैन इज नॉट स्टॉपिंग क्रिस्टल। चौथा राउंड ग्लोबल esports के लिए, एक कदम डीएफएम तो दूसरा कदम ग्लोबल esports। हार नहीं मानने वाले, हार नहीं मानने वाले। जो उनकी विन कंडीशन लोटस पे थी, वो एक बार फिर से रिएक्टिवेट कर दी है। आउट रोटेटिंग डीएफएम। केलीएस देख लीजिए, जिस तरह से डीएफएम ने स्टार्टिंग में मिड पे प्रेजेंस दिखाई थी, बी पे प्रेजेंस दिखाई थी, उसके चलते केलीएस ने ऑलरेडी ए मेन कंट्रोल लेके बहुत फॉरवर्ड पोजीशनिंग पे अपनी बॉल लगा दी थी। एंड इतनी फॉरवर्ड पोजीशनिंग डीएफएम ने जी की तरफ से अब तक देखी नहीं है। अगर देखी है तो पनिश की है। They saw Patrick who's off at B. They go towards A to avoid that, but guess what? Patrick who is still there. वो पूरा पहुंच चुके थे before GE can have a good say in that round, before DFM can even make an entry, and once again the op strikes. Patrick who man advantage secure करते ही वापस fall back कर जाएंगे. Now the ball is in the court of DFM. well. चलिए 8 के तरफ ड्रोन्स to get some information। DFM के 2 खिलाड़ियों की पोजीशन यहाँ पे रिवील हुई जरूर है, बट अकामे और उनके साथी 8 अभी भी प्रोग्रेस करते हुए, they are not hesitating, they are not shooed away by that drone। अब शायद मुझे लगता है कि ग्लोबल esports को धीरे-धीरे अपने पेशेंस लेके आने चाहिए, बिकॉज आप देखिए ए साइड के बाहर चारों खिलाड़ी मौजूद, यहाँ से स्विच अप करके बी साइड तक जाने के लिए जो रास्ता अपनाना पड़ेगा ग्लोबल esports ने, उसको भी लॉकआउट कर दिया है। सो आई लाइक दिस सेटअप, जो चीज की आप बात कर रहे थे, काउंटर रोटेटिंग डीएफएम कर रहे हैं। ओ भाई गए So well, उन्होंने मेक के टेलीपोर्ट को भी गार्ड करके रखा है। केलीएस sets up a trap. Nowhere to run, nowhere to hide. They will just have to hide and bide their time now, hoping to save. अकामे कैसे ही किल निकालेंगे, कोई भी उन्हें फ्रैग देने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई पीक ही नहीं कर रहा है।
DFM उम्मीद कर रहे हैं कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक ओपनिंग मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। GE give them nothing. मजा आ रहा है देखने बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कदम के मजा आ रहा है देखने। जा रहे हैं, मुझे लगता है कि they have figured out a way to counter DFM. अभी देखिए DFM initially क्या कर रही थी, they were not giving away or rather वो information गेट कीप नहीं कर रहे थे शुरुआती बेसिकली राउंड्स पे, बट अब वही से शॉट फायदा उठाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वाला अच्छा मारा आपका। फायर कर रहे हैं और उससे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ हिट करेंगे और हर एक एंगल को मार्क करके बैठी हुई है कि ओपनिंग मिलेगी ही नहीं। ग्लोबल स्पोर्ट्स आई बिलीव बराबरी हो चुकी है 5-5 का ये स्कोर लाइन, बट ये हाफ खत्म करना चाहेंगे एक लीड के सहारे ताकि जब वो अटैक पे आए पैट्रिक अपना दबदबा दिखा सके। ओह इस बार शायद मैं अपना दबदबा बनाएंगे। जो ट्रैप सेटअप्स जीए ने लोटस पे किए थे शायद हमें डीएफएम की तरफ से वही देखने मिल सकते हैं। डायमेंशनल ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करके क्या वो किसी प्लेयर को पनिश कर पाएंगे? अनलाइक जी जिनके पास एक ब्रीच था पिछले मैच में, इस बार अगर कोई यूरू उन्हें स्पॉट करेगा तो इमीडिएटली स्टन करने के लिए डीएफएम के पास कुछ नहीं है। The max they can do is use this dimensional drift as a big recon dart, as a big owl drone to gather information. उदुतान को देख लिया, पैट्रिक को देख लिया, पता पड़ेगा कि यहाँ पे उनके ऑप प्रेजेंट है। ऑप अवॉइड करो, बी लिंक जाओ। ओह वेट, बी लिंक लेने के बाद दे आर टेकिंग कनेक्टेड कंट्रोल एंड पापी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मुझे लगा एंटिसिपेट करेंगे पापी, मुझे लगा ही वाज रेडी फॉर इट, मुझे लगा था कि वही पोजीशन कैपिटलाइज करके बैठे हुए थे बिकॉज़ as soon as the dimensional drift comes in बहुत कॉमन नॉलेज है कि बी साइड पे तो जाएंगे क्रिस्टल का केव है। ए साइड पे अकेले खिलाड़ी क्रिस्टल हमने देखा है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आते हुए, बट कैलीएस के साइड में अंदर घुसना है बहुत जल्दी वरना साइड क्लियर आउट हो जाएगा। ग्लोबली स्पोर्ट्स इट्स टाइम टू फॉल बैक। या नॉर्मली डीएफएम यहाँ पे एक 100 डालती है ये शेड के ऊपर, लेकिन इस बार देख लीजिए स्मोक्स उन्होंने किस तरह से प्लेस किए हैं। ये स्मोक्स पर्टिकुलरली कैलीएस के वो क्वाड्रा किल के पोजीशन को काउंटर करने के लिए थे, और एक बार फिर से ए पे फेक स्मोक्स डाल के वो जाएंगे बी पे। अब यहाँ पे उदतान के कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, उनको यहाँ पे जितने हो सके किल्स बटोरने हैं टू गेट हिज टीम एन एडवांटेज इन द पोस्ट प्लांट। नाइस किल ऑन टू जिनबोंग। ओहो ही कैन डू मच मोर देन दैट। ट्रिपल फ्रॉम उदतान एंड दैट शुड सिक्योर द राउंड। अगर आपको बी साइड के कोई गार्डियन एंजल चाहिए तो भाई उदतान क्या खेला भाई वो। उठते हुए नहीं आए बट हे जरूर मौजूद बी साइड को एंकर होके थे एंड एग्जैक्टली राइट। क्या खूबसूरती के साथ प्लांटर को टेक डाउन करना उनके लिए थोड़ा रिस्की सिचुएशन था बिकॉज़ देयर वाज अ गार्ड एज वेल, बट फाइंडिंग टाइमिंग उस चीज का टाइमिंग मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, ज्यादा एग्रेसिव पिक नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो अकेले खिलाड़ी एक साइड को होल्ड करते हैं थोड़ा एंकर पोजीशन होल्ड करते ताकि राइट फ्रॉम द गेट गो ऑफेंस पनिश कर पाए, बट इस बार टाइम दिया डीएफएम को जगह में आने दिया, सेटल होने दिया। जैसे ही वो उनके गार्ड्स डाउन थे उड़ता न्यू वेंट टू कैपिटलाइज एंड जीई दे गेट द लीड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस गेम। जी गेट द लीड, अब उनको अपनी अल्टीमेट सिचुएशन का भी संभाल के खेलना पड़ेगा। उदतान का लॉकडाउन बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ है। ही इज हैड इट इन हिज बैक पॉकेट फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ राउंड्स नाउ। कैलीएस स्टील गार्डन तैयार, क्रिस्टल ए पे उन्हें अल्ट ऑफ उठा के अपना हंटर्स फ्यूरी तैयार कर लिया है। सो नाउ दे आर रेडी। उन्हें मालूम है कि डीएफएम यहाँ पे प्लांट करने आएगी और उसका इंस्टेंट रिस्पांस है ये लॉकडाउन। चलिए हंटर्स फ्यूरी भी आ गया बट दिस टाइम इट्स फ्रॉम क्रिस्टल। ही पॉइंट्स टू डीएफएम के जिम्बोंग और आर्ट ने 2 किल जरूर निकाले, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी ऑफ एनी यूज। इट्स बीन रेंडर्ड यूजलेस। 3 खिलाड़ी अभी भी बचे दो साइट के बाहर। स्पाइक और इस बार जिस तरीके रोटेशंस आए 8 का भी हिल कम है तो आप अपनी किस्मत 10-12 एचपी होगा। बी साउथ पे उड़तान मौजूद है। 5 एचपी है बे। जिस तरह से उड़तान ने पैट्रिक को मार गिराया है यहाँ पे डीएफएम ने बहुत ही जितना सिचुएशनल एडवांटेज था उनको फेस्ट पूरा गया। के बावजूद अगर डीएफएम को यहाँ पे 2 किल्स मिल रहे हैं तो जी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। एंड लुक एट दिस, जी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स द ए साइड। कैलीएस ने फुटस्टेप सुन लिए हैं आर्ट के, अपना रेजर वन एक्टिवेट करते ही उन्हें पता पड़ गया है कि जी नोज अबाउट देयर मूवमेंट, सो दे ट्राई टू गो बैक टुवर्ड्स द बी साइड। कैलीएस ने लगाया अपना स्टील गार्डन, ही वोंट बी फाइटिंग एनीवन विद इट। आर्ट शॉर्टी देके तैयार है उधर बाजू में ही, उनको बस ये प्लांट डिनाई करना है। प्लांट डिनाई करने के लिए उन्होंने काउंटर यूटिल डाली है लेकिन कुछ नहीं मिलेगा क्रिस्टल को एंड डीएफएम गेट व्हाट दे वांटेड। ओह वाओ, आर्ट पेशेंट प्ले वहां पे दिखाते हुए कैलीएस को टेक डाउन करेंगे 2v3। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि शायद एक मौका बन सकता है डीएफएम को कैप्चर करने के लिए। छठा राउंड अपना ढूंढ रहे ताकि अगले हाफ में जा सके बराबरी के साथ, बट क्रिस्टल मौजूद, पापी मौजूद।
He is the daddy in this half. Double setup. भाई क्या Globally सी. Sports एक बार फिर से DFM को शट डाउन करेंगे, डिफ्यूज हो जाएगा। 7-5 इस हाफ को Hello क्लोज आउट Joker, करेंगे। welcome to बहुत the क्लोज थे जहाँ पे stream. मुझे लगा था कि शायद DFM इस मैच पे आए थे, इस मैप पे आए थे रिवेंज स्टोरी लेके। ग्लोबल स्पोर्ट्स ने एक ओनो रिवर्स कार्ड पकड़ा और राइट फ्रॉम द गेट गो एक शॉट DFM बैक टू वेयर दे बिलोंग। बहुत ही अच्छा कमबैक था ये। हंटर्स फ्यूरी वाज मैसिव। 2 प्लेयर फर्स्ट गेम में ही टैग हो गए, दोनों प्लेयर्स को मार के लाया गया। बट फिर भी the fact that DFM managed to get a man advantage out of it is just insane. और अगर आर्ट स्टार्टिंग से ही अपनी टीम के साथ खेल रहे रहते तो शायद ये राउंड DFM के खाते में जा सकता था। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स उस 2v3 रीटेक सिचुएशन में जहां पे उनके पास एडवांटेज नहीं है, they find a way to isolate those gun fights. पापी wins his duel और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट duel था। उसके बाद आर्ट को तो मारना फिर भी आसान हो गया, वो तो ऑलरेडी 5 HP पे ही थे, तो उनके तरफ अगर आप फूक भी मार देते तो वो मारे जाते। एंड पापी गेट्स दैट फाइनल फ्रैग। 7-5 का लीड एस्टैब्लिश किया है यहाँ पे जीई ने, लेकिन अनलाइक 9-3 ये उतना बड़ा लीड नहीं है। लीड बड़ा नहीं है, बट आई फील लाइक यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? बिकॉज DFM इस मैप पे आई थिंक कमबैक करने की इंटेंशन से और कमबैक हो भी रहा था। इनफैक्ट डोमिनेट भाई जो 30 सेकंड का कैसे भाई. लास्ट के दौरान भी बताया, जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन गेटकीप नहीं कर रहे थे, आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक एम बैरियर में DFM यहाँ पे शायद ग्लोबल स्पोर्ट्स को मात्र देके निकल जाए, बट दैट वाज आल्सो शट डाउन एज वेल। एंड दिस वन ऑफ द रीजंस व्हाई मुझे लगता है कि DFM अभी मोराली बहुत ज्यादा डाउन फील करेंगे, बिकॉज यहाँ से कमबैक करने का ये मतलब है कि यू नीड टू गेट द नेक्स्ट राउंड, यू नीड टू गेट द बोनस राउंड एज वेल। बराबरी कीजिए, उसके बाद you have to play once again वही सेम मेंटालिटी के साथ लोटस में जैसे खेल रहे थे, हर एक राउंड बीइंग द लास्ट राउंड, they will have to play like that and that is not a good space to be. Absolutely not. May because of him being a Yoru, he can play these aggro positions. Akame भी देखो किस तरह से वन एंड डन स्पॉट्स खेल सकते हैं, एंड ये दो प्लेयर्स अपने ट्रैप्स के साथ, अपने गेट आउट ऑफ जेल फ्री के कार्ड्स के साथ, ये कोई भी ऑफ एंगल पकड़ के अपनी टीम को एक मैन एडवांटेज दिला सकते हैं। दोनों ही प्लेयर्स के गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड्स इस्तेमाल कर दिए गए हैं। एक सेकंड टीपी अवेलेबल तो है योरू के पास, लेकिन अभी उनको अकामे के साथ एक क्रॉसफायर बना के खेलना पड़ेगा, नहीं तो ये बी साइड बहुत ही खतरे में आ जाएगी। But I like this from Global Esports so far. Yeah. मतलब in spite of information, in spite of the information being given out, हेजिटेट नहीं किया। अभी तक वो बी साइड का कंट्रोल मेंटेन कर रहे हैं, उनको पता है कि फोर्स आउट करेंगे DFM को और मिड से प्रेजेंस के लिए। सो पापी दोनों खिलाड़ी आएंगे जरूर। 8 को एक किल मिला, बट पापी स्टेप्स अप राइट इन टाइम। जिम्बोंग है मौजूद ट्रेड करने के लिए, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स इतनी देर में साइड तो कैप्चर हो जानी चाहिए, तो साइड कैप्चर हो चुकी है। पापी गोस बिग, फाइंड्स अ ट्रिपल एंड नाउ इट्स जस्ट डाउन टू अकामे। Oh, Global Esports once again securing the win. और ये पिछले गेम से स्टोरी लाइन फिर से कंटिन्यू होती हुई। DFM almost always win the first pistol round and Global Esports win the second pistol. लोटस में भी हमें यही देखने मिला था, इस बार भी हमें यही देखने मिल रहा है। Wow, that's what happens when they line up. And we saw this before as well, you know. Crystal ने वो double kill निकाला था लोटस पे when he was facing a high-low setup. आज 22 It's almost like a collateral. नेक्स्ट जी मैच कब है? की स्पेसिंग थोड़ी खराब हो रही है और जी इसका हर बार फायदा उठा रहे हैं। 31 को इस बार तो ग्लोबल स्पोर्ट्स एक ही बार होल्ड कर रहे थे होंगे, 2:30 बजे। दिस टाइम इट सीम्स लाइक जिम्बोंग है जरूर। आई डोंट थिंक वो एक एंगल है जो पनिश होना चाहिए, बट उड़तान भी उड़तान, ऑफ कोर्स उनके शॉट्स कनेक्ट होंगे। बीट अ मार्शल, बीट एन आउटलॉ, बीट जस्ट अ सिंपल Exactly. Like you wouldn't expect a sentinel to play with an op or a marshal, right? उनने लोटस में भी as a cypher attacking op निकाली थी अकामे, लेकिन nice shot onto Kelly S. लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं है ये जी के लिए। They still have most of their initiating power on Crystal. उनका recon dart अभी कुछ ही सेकंड में वापस ऑनलाइन भी आ जाएगा। ये लो आ गया। And with that, they can re-hit anywhere they want and they have all the options. उड़ातान already B के स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं। ए मेन पे अभी भी पैट्रिक अपनी इंफॉर्मेशन, अपना साउंड दे रहे थे, and DFM is reading this all wrong. उन्ने उड़ातान नहीं, उन्ने पैट्रिक के फुटस्टेप्स को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और सब ने ए पे रोटेशन निकाल दिया है, जबकि उड़ातान सोलो बी साइड क्लियर कर चुके हैं।
I mean अगर रीड भी करते तो फिर शायद कुछ खास कर नहीं पाते, because again पहला पिस्टल राउंड वो विन कंडीशन था डीएफएम के लिए, वो पिस्टल राउंड जीतना चाहिए था, उसके बाद इस राउंड के साथ बैकअप करना चाहिए था बराबरी करने के लिए, बट इस बार मुझे लगता है ग्लोबल स्पोर्ट्स ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। चारों बंदूकें अभी तक ऑनलाइन है और आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपने पोस्ट मैन पोजीशंस में भी पहुंच चुके हैं। डीएफएम एक एक करके फ्लश आउट करेंगे, दे नो द एंगल्स फ्रॉम वेयर दे गोना कम फ्रॉम एज वेल। चारों क्लासिक्स, आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी इनफ। No, it's not enough. I mean, they don't even want to retake. उनको स्पाइक पे अपनी जान देनी है. Oh, never mind. They're actually trying to fight this. All right then, this might just work. We have a fight, Oh ladies bhai. and gentlemen. And G थोड़े off guard पकड़े गए थे. They were clearly not prepared to battle this out, but they will have to survive. And G are like, thank you so much for the free ult orbs. We will take that any day. भाई And पापी तो खेल रहा है भाई। देखिए एटलीस्ट 2 किल मिले थे डीएफएम को, एंड टू डू जस्टिस टू देम मुझे लगता है कि शायद वो फाइट का डिसीजन सही भी था, कंसीडरिंग चारों खिलाड़ी अलाइव थे, उन्हें लगा कि शायद क्लोज क्वार्टर्स में ये बैटल्स उनको करने को मिलेगा, एंड वी नो इन क्लोज क्वार्टर्स द क्लासिक कैन एक्चुअली बी अ लिटिल डेडली, बट देन ऑफ कोर्स ग्लोबली स्पोर्ट्स उनको पता था, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। साइड पे 2 खिलाड़ी मौजूद थे, साइड के बाहर 2 खिलाड़ी मौजूद थे, एंड ऑफ कोर्स दे वर ऑलवेज गोना विन द लॉन्ग डिस्टेंस बैटल्स। अभी देखिए 9वां राउंड ग्लोबली स्पोर्ट्स के खाते में, अल्ट ऑब्स बहुत करीब है, 2 और ऑब चाहिए पापी को अपना कॉस्मिक डिवाइड ऑनलाइन करने के लिए, एंड आई बिलीव द कॉस्मिक डिवाइड कैन एक्चुअली बी एन इमेंस हेल्प। इस बार 3 खिलाड़ी 8 पे जाने की कोशिश, और सामने अकेले खिलाड़ी मौजूद है, एक एक करके पीक देंगे तो ऑब्वियसली डाउन होंगे, बट पैट्रिक टू पनिशेस हिम। या बहुत कम वेपन्स है इनके पास, एक ही वैंडल थी पूरी टीम पे, वो भी पैट्रिक ने रिकवर कर ली है, लेकिन 8 उसे वापस गिरा देंगे। Can they get that weapon again? I don't think यहाँ पे पापी और आगे जाना चाहते हैं। उन्हें 2 प्लेयर्स मिनिमम 3 की फुटस्टेप्स आ चुके थे, तो उन्हें मालूम है कि एक साइड पे काफी बड़ा स्टैक है। अब देखते हैं क्रिस्टल को कोई पिक मिलता है या नहीं। धीरे धीरे वो जा रहे हैं फ्लावर पॉट की तरफ। ऑफ टाइमिंग पे गेन ने उन्हें पीक किया, लेकिन फिर भी चिप डैमेज हुए सिर्फ दोनों प्लेयर्स। क्रिस्टल हैज टू थैंक हिज गॉड्स टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा सिचुएशन था, मुझे लगा नहीं कि शायद क्रिस्टल बच पाएंगे, बट है ना मैनेज टू गेट टू सेफ्टी। 10 मोर शॉट्स इसके बहुत करीबी मामला था, बट अब देखिए फ्लैश आया, वाइस का 8 goes in straight, and Kelly is of course with the classic what globally स्पोर्ट्स धीरे साइड पे पुश इन कर चुके हैं, बट मुझे लगता नहीं कि कंफर्टेबली वो पिक्स निकालेंगे, प्लांट करने की कोशिश यहाँ पे, बट वो जस्ट फेक था, बीट आउट करना चाहते यहाँ पे। I mean जिस तरह से बिना स्मोक के उन्होंने फ्लावर क्रॉस किया, एंड दोनों ही बार मैं उन्हें नहीं मार रहा है, मैं तो बहुत ओ भाई, एंड केली बेट्स इट आउट, ही गोस फॉर एन एक्सट्रीमली सेफ प्लान। पापी अननेसेसरी डुअल लेंगे, लेकिन फिर भी जीतेंगे, एंड ही स्नैप्स ऑनटू गेन। Absolutely unreal shots by Papi over here. He had no business winning the round like this. मुझे तो सच में लगा था कि DFM डबल पीक करके 3 पॉइंट ले जा रहा है गाइस। wins the first fight, second fight भी जीत गए, एंड पापी को तो वहां पे फाइट करने की जरूरत भी नहीं थी। उनका काम था कैलियस को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई अगर प्लेयर आर्ट से आया, फ्लावर पॉट के लेफ्ट साइड से आए, तो उनको मार गिराए। अगर कोई भी प्लेयर सीक्रेट से आता है, वो तो वैसे भी पापी वो बोलता ना, वो तो वैसे भी कैली को मार ही नहीं पाएंगे। So Papi doesn't need to fight this, but he still does, and he still wins. Bro, that's just absolutely insane. ये तो DFM बहुत ज़्यादा tilt हो जाएगी। That is madness to be honest. And मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना एक नया पेट हस्की लिया है, और उसको अभी मैं ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। It's more like कि आप एक ट्रीट दो और पपी को अपना कमांड सुनाओ, जब पपी कमांड सुनता है तो आप बोलो गुड बॉय। यहाँ पे केलियस स्पाइक प्लांट का साउंड दे रहे थे, DFM एक करके क्या चल रहा है भाई? I did not say that. I did not say classical conditioning in Valorant. ये philosophy class के lessons आप Valorant में मत लगाइए please. उड़तान यहाँ पे खुद की क्लास चला रहे हैं, teaches Akame a lesson, and he tries to jump peek out of that smoke with an outlaw that's very difficult to do, and May finally punishes him for it. Wow. But इस बार एटलीस्ट शेरिफ गेम DFM का बहुत बढ़िया चल रहा है। Again, खूबसूरत शॉट ऑन टुवर्ड्स पैट्रिक को, वो शॉट कार्ड कनेक्ट होगा नहीं, बट कैलियस बहुत इजीली कनेक्ट है। भाई लोग कॉन्टेक्ट कैसे मारते हैं भाई? DFM को थोड़ा सा अभी ट्राई हार्ड करना पड़ेगा इस साइड को रिक्लेम करने के लिए, बिकॉज़ स्मोक ऑफ हो चुके हैं और उतने ज्यादा यूटिलिटीज या फिर वेपनरी एडवांटेज है नहीं। मे की पोजीशन शायद वो एंटिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन कैलियस को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर 2 प्लेयर्स आने वाले हैं। ओह टाइमिंग, पापी could have caught them off guard. कैलियस एक बार फिर से फ्लैश हो जाएंगे,
क्रिस्टल उनके साथ क्रॉसफायर बनाने के तैयार है, लेकिन जिनबुंग को कोई फाइट दे ही नहीं रहा है। एंड आर्ट इज लाइक, भाई कोई तो पीक कर लो प्लीज, आके हमें कोई फाइट कर लो, हम ऐसे यहाँ पे डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। बीकॉन का तोड़ दिया, स्पैम भी नहीं लगेगा, एंड दे बोथ हैव टू फेस देम हेड ऑन। क्रिस्टल ने 2 लिया, दोनों को लिया क्रिस्टल ने। वेल वेल वेल, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 11वां राउंड खाते में। ऑफ कोर्स 3 अल्टीमेट्स उनके पास है मौजूद, क्या ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे जीत की तरफ बढ़ते हुए टीएफएम काउंटर करने की कोशिश कर तो रहे, बट इट सीम्स लाइक कि एवरी सिंगल अटेम्प्ट हैज बीन शट डाउन। और कैसे कैसे यहाँ पे वो शट डाउन करेंगे जब एक एक करके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हमको देखने को मिलते हैं इस तरीके से। क्रिस्टल इस बार वो ट्रिपल किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 11वां राउंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब we'll have to find out how DFM can mount this comeback. मुश्किल रहने वाला है। Once again, slow steady approach by global esports. आर्ट पे कांटेक्ट पे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे Give me the arsenal. एक्टिवेट करके पूरी साइड क्लियर आउट करा दी है। डीएफएम को अगर इस साइड पे वापस आना है तो उनको स्मोक्स के थ्रू जाके ये फाइट फोर्स करनी पड़ेगी, और वो फोर्स करने जाएंगे तो मारे जाएंगे। पैट्रिक हु हैज द एलिवेशन, हैज द फ्रैग। चलिए साइड एक बार फिर से उनके हवाले। डीएफएम कोशिश जरूर करेंगे, बट बीन एब्सोल्युटली लॉक्ड आउट, कोई मौका है ही नहीं। और उस जले पे नमक छिड़कने के लिए पापी ने अपना कॉस्मिक डिवाइड भी लगा दिया है। नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ डाल के जी ने एक परफेक्ट डिश परोसी है। एंड कॉस्मिक डिवाइड को पाउंस करने के लिए 3 प्लेयर एक साथ ट्रिपल पी करने के लिए तैयार है। उनके डायरेक्टली नीचे बैठे हैं केली, अब तक किसी ने स्पॉट नहीं किया है। एंड क्रिस्टल केली दोनों एक साथ पाउंस करेंगे। 3v2 वंस अगेन, नो मोर काउंटर यूटिल लेफ्ट फॉर डीएफएम। ये स्मोक कुछ ही जगह पे फेड होने वाला है, लेकिन स्पाइक डिफ्यूज अवॉइड करने के लिए क्रिस्टल के पास हंटर्स फ्यूरी है, पापी के पास एक कॉस्मिक डिवाइड नहीं, क्या ग्रेविटी वेल है। राउंड गया, नाइस। जी फाइटिंग एक्सप्लोर किया जाएगा, डीएफएम की रीटेक डिनाई की जाएगी। द ओनली सिल्वर लाइनिंग फॉर डीएफएम इज दैट उन्होंने ऑप अभी भी अपने पास बचा के रखी है। सिल्वर लाइनिंग है कि नहीं मुझे पता तो नहीं है, बट इट सीम्स लाइक ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक रिवेंज आर्क जो प्लान कर रहे थे वो रिवेंज आर्क को एग्जीक्यूट भी कर चुके हैं। हमको पता था इट्स गोना बी डिफिकल्ट। इनफैक्ट हमारे जो एनी भाई है उन्होंने इनफैक्ट एक 2-1 का स्कोर लाइन प्रेडिक्ट किया था, बट आई फील लाइक द टीम हैज आउट परफॉर्म्ड देयर माइंड्स आउट टुडे। मजा आ रहा है खेलने में, मजा आ रहा है देखने में, मजा आ रहा है। आई एम प्रीटी श्योर खिलाड़ियों को खेलने में मजा आ रहा होगा, बिकॉज़ दिस इज अ सिम्फनी ऑफ मैडनेस। chaos है, confusion है, but global esports somehow इसको काम करवा रही है। They're making use of it. देखिए, I mean, wow, why? He had the better angle. Akame position में बैठे हुए थे, but still Patrick who finds the frag. And he can't even TP out in time. आर्ट ने desperate hunters fury मारी है। ओ भाई पापी ने No more smokes for GE, लेकिन बिना स्मोक्स के क्या वो कांटेक्ट प्ले फ्रैग के बेसिस पे राउंड जीत सकते हैं? पहले भी उन्होंने करके दिखाया है। पैट्रिक को स्लोली स्नीक इन करेंगे, आर्ट रीक्लियर करने के लिए आएंगे, लेकिन आर्ट विंस द बैटल। एंड एट दिस पॉइंट डीएफएम के पास इतना एडवांटेज आ चुका है कि वो पूरा का पूरा राउंड कन्वर्ट कर सकते हैं। अनलेस केली गेट्स अ फ्रीबी। नो, ही डजंट। टेक्स डैमेज, अवॉइड्स द फाइट, सेंट बैक टू स्पॉट। जी वापस स्क्वायर वन पे आ चुके हैं। रन का इसका गेम है भाई, इसका गेम है, इसका गेम है पूरा, उदरतन का गेम है। पोजीशनिंग देख के डीएफएम के खिलाड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना 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 ना। मुझे लगा 2 मिनट के लिए शायद वो हो सकता है, बट वो हुआ नहीं। लॉकडाउन लगा दिया है। ऑल ऑफ अ सडन ही इज गोना फोर्स डीएफएम प्लेयर्स राइट इनटू हिज क्रॉसेस। उड़ान की पोजीशनिंग आप देखिए, वहां पे पेड आउट किया गया था, बट डायमेंशनल ड्रिफ्ट से ही टाइम पे एस्केप्स आउट टू सेफ्टी, बट दिस टाइम क्रिस्टल पनिशेस हिम स्टाइल। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अभी भी इस मैच में बने हुए हैं। मैं अपना डायमेंशनल ड्रिफ्ट खोलेंगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट नो, आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। राउंड हमको देखने को मिलेगा एटलीस्ट। That was a ballsy lockdown, man. That was the most aggressive lockdown ever. History of VCT Pacific. And obviously अगर आप इतना ज़्यादा ballsy lockdown डालोगे वो naturally तोड़ा जाएगा। बहुत ही अच्छा काउंटर किया है यहाँ पे मे ने अपनी डायमेंशनल ड्रिफ्ट से क्रॉसर पोजीशनिंग डिस्प्लेस की उड़ान की, एंड उसके इमीडिएटली बाद एस्ट्रा पीक्स किल्स हिम। I mean,
देखिए एक तारीफ तो करनी पड़ेगी उड़ोतान की कि मतलब अपने अर्जेस को कितनी खूबसूरती के साथ रेजिस्ट किया। अगर मेरे सामने जिम्बोंग वैसे पोजीशन में रहते मेरा माउस व्हील ऑटोमेटिकली स्क्रॉल अप हो जाता। क्रिप्स विदाउट इवन टेलिंग मुझे लगता नहीं कि वो मेरे ब्रेन सिग्नल आता, वो मेरे स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स आता कि नहीं मुझे कुछ चाकू करना है, इसलिए आप वहां पे नहीं खेल रहे उनके साथ। Exactly right. But इस बार global esports, it seems like DFM fought out करना चाहती है ये fight. They are fighting them in every angle, but Kelia shuts down Art. Papi shuts down Gwen. अब तो नहीं हारेंगे Global भाई, फोड़ esports भी धीरे-धीरे जीत की तरफ बढ़ते हुए, but Jimbong थोड़ा सा deny करेंगे वो। Yep. बहुत अननेसेसरी एग्रेशन था उड़ोतान की तरफ से। केलियस अकेले प्लेयर है जो स्टील गार्डन के अंदर डिटेन नहीं हुए हैं। पापी ट्राइज टू रीपोजिशन अराउंड द स्मोक, जिनबोंग इन्हें मार गिराएंगे। पूरा राउंड अब सिर्फ केलियस पे डिपेंड करता है। क्रिस्टल की भी वैंडल वापस आ चुकी है, बट पोस्ट प्लान पोजीशनिंग क्रिस्टल की इतनी ज्यादा खास नहीं है, ना ही उनके पास कुछ यूटिल है डिफ्यूज डिनाई करने की। या ही इज जस्ट गोना कॉल इट अ सेव एंड DFM will take another round. हर एक बार मैप पॉइंट पे आके ग्लोबल esports थोड़ा सा लड़खड़ा slack off जाते कर हैं जाता है। हाँ मतलब थोड़ा slack off कर जाते हैं, मुझे लगता है कि आई काइंड ऑफ फेल्ट जल्दी क्लियर आउट करेंगे इसको, बट देन अगेन DFM दे आर नॉट स्केयर्ड टू फाइट। एटलीस्ट ये एक अप्रोच हमने देखा है उनकी तरफ से कि ठीक है नो मैटर व्हाट यूटिलिटी है, टीम सिनर्जी है कि नहीं है, पोजीशनिंग एडवांटेज है कि नहीं है, दे विल ऑलवेज यूज देयर गन्स एंड they've been doing a good job so far. It's just that it's not good enough. Yeah, it's not good enough. लेकिन अभी भी होप बरकरार है DFM के लिए। अकामे 1 पॉइंट अवे है अपनी टूर दे फोर्स के साथ एंड दे स्टिल हैव द कॉस्मिक डिवाइड, लेकिन जी के पास एक भी अल्टीमेट नहीं है। उड़ोतान ने मे को स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर दिया। दैट्स अ फ्री किल। ओके कूल, यू कैन रिस्पॉन्ड बाय किलिंग पैट्रिक हू, बट द ओवरऑल स्टैट स्टिल रिमेंस द सेम। इन अ 4v4 DFM को अपने डिफेंसेस और ज्यादा थिनली स्प्रेड आउट करने पड़ेंगे एंड आर्ट कंट्रोल ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने हमेशा सक्सेसफुली लिया है। DFM तो इस बार उन्हें कंटेस्ट भी नहीं करेंगे। पापी ये पोजीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रहा है मेरे को, बिकॉज जिस तरीके से बी साइड के बाहर एग्रेसिवली वो स्मोक्स डाल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद देयर माइट बी अ स्विच, बट क्रिस्टल को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा बिकॉज मिड हैज बीन एब्सोल्युटली स्वॉर्म्ड। अब देखिए दो खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद, आर्ट एज वेल एज जिम्बोंग। बी साइड को गार्ड करने के लिए एनफ रिसोर्सेज है at that or die. यहाँ पे मुझे लगता है ये स्टील गार्डन बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। उड़ान finds Art, DFM find two for themselves. It's a 2v3 once again. Spike. And is it Spike mid पे गिरा दिया है। या वो स्टील गार्डन जैसे ही एक्टिवेट किया, आर्ट वो स्टील गार्डन एस्केप करने के लिए आगे भागे। आर्ट पे तो किल मिल गया उनको, लेकिन बाद में पूरी टीम वहीं पे आ चुकी थी एंड स्पाइक वहीं पे गिरा दिया गया है। ओह अमेजिंग रिकवरी बाय DFM। अगर वो स्पाइक बी मेन से आता इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट बाय डबल डोर्स, शायद जी को प्लांट भी मिल जाता और राउंड भी। लेकिन जैसे ही DFM को पता पड़ा कि हम बी मेन कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो स्टील गार्डन हमें वहां से भगा देगा। दे डबल डाउन ऑन डबल डोर्स एंड वो एरिया पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पूरे प्लेयर्स की फोर्सेस को वहां पे कमिट कर दिया एक्सेप्ट फॉर चेंबर एंड इट वर्क्स फॉर देम। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का टाइम आउट 12-8 का स्कोर लाइन। यूजुअली अगर आप ये स्कोर लाइन देखोगे तो शायद आपको लगेगा ग्लोबल ईस्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट इट्स ऑल अबाउट पेइंग रिस्पेक्ट टू ओपोनेंट्स एज वेल। एंड आई फील जिस तरीके से DFM ने 2-3 बार अपना मोमेंटम बनाया है, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए वो टाइम आउट लेना पड़ा है। या It's not always to discuss strategies. मुझे लगता है क्रिप्स कभी कभार तो वो मोमेंटम और गेम को स्लो डाउन करने के लिए भी टाइम आउट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि फुटबॉल में आप एक फाउल कर रहे हो। या एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि अब तक DFM ने एक भी टाइम आउट नहीं लिया है। उनके दोनों के दोनों टैक्टिकल टाइम आउट्स अभी भी अवेलेबल है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू आवर हड। वेल लगता है मन ही मन हार मान लिया है यहाँ पे DFM ने। अभी भी 4 राउंड लेके जा सकते हैं, ये मैच जीतना नामुमकिन नहीं है। इनफैक्ट 4 राउंड इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट बिकॉज 3 बैक टू बैक राउंड DFM को मिल चुका है। एक मैक्स लॉस बोनस उनके पास जा रहा है। इन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 4 शेरिफ उनके खाते में और 1 हीरो वैंडल ऑन पैट्रिक। इट्स गोना बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू होल्ड आउट दिस अटैक, स्पेशली जिस तरीके से सारे के सारे खिलाड़ी पोजीशन है, बट द ऑपरेटर गोज ऑफलाइन ऑल बिकॉज़ ऑफ पैट्रिक हू। पैट्रिक हू
इंटरनेशनल स्टेज पे उनका पहला डेब्यू परफॉर्मेंस और वो ऑलरेडी सबको इम्प्रेस कर रहे हैं। गेन ने फाइनली उनके किलिंग स्पीड को मार गिराया है, लेकिन ऑप बीइंग डाउन इज अ बिग विन। ट्रिपल पी आने ही वाला है। गेन इन अ लॉट ऑफ डेंजर, ही इज आउट ऑफ द, ही इज लाइक नोप, मुझे नहीं लेनी ये फाइट, ले लो आप आर्ट कंट्रोल हमसे, कोई बात नहीं, हम ए साइड को रीइंफोर्स करेंगे। एंड बिकॉज डीएफएम ने आर्ट कंट्रोल खो दिया है, दे आर नाउ ट्राइंग टू रीटेक ए मेन कंट्रोल। और जीई को ये मालूम है, उन्हें मालूम है कि डीएफएम का ए मेन पे पुश आने वाला है। उसको पनिश करने के लिए 4 प्लेयर वापस से जी के उस तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं क्रिप्स, मुझे लगता नहीं ये मेन का सोच रहे, बिकॉज मेन ने एक टीपी मार के सीधा बी पे चले गए। नाउ इट्स ऑल डाउन टू आर्ट। 1v4 चारों खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा कि एक एक करके फिनिश ऑफ करते। इट माइट बी बिग, ही गोस बिग काइंडा। 2 किल मिला उनको, बट उड़थान ने इंस्टेंट शटडाउन किया और ए साइड कंप्लीटली ग्लोबल स्पोर्ट्स के कंट्रोल पे। यप, और प्लांट भी आ सकता है। एक बार फिर से उड़थान सीक्रेट कंट्रोल लेने के लिए जाएंगे, लेकिन क्रिस्टल ही जंप्स बैक इन कवर। उनने साथ में मेई को भी स्पॉट कर दिया है। ही इज एक्सपेक्टिंग अ पुश फ्रॉम आर्ट, लेकिन वहां से तो कोई नहीं आने वाले। ट्राइज टू गो फॉर द फेक टैप। वक्त बहुत कम है, उन्हें कमिट करना ही पड़ेगा। एंड दिस टाइम इज द फुल कमिटमेंट। मेई कमिंग फ्रॉम फ्लावर्स, जिनबोंग कमिंग फ्रॉम ओहो, एंटी फाइट्स मिल सकती है उन्हें, लेकिन उसके बावजूद वो फाइट नहीं जीत पाएंगे। May gets the final nail in the coffin, and DFM keep going strong. Keep going strong, but do they have enough? Do GE have enough to buy guns in the next round? क्या उनके पास enough economy है कि अगले राउंड में वो Vandals reactivate हो पाए? देखना पड़ेगा। बट अगर हम फिर से एक बार रिप्ले को देखें, दिस वाज अ ग्रेट राउंड। पैट्रिक होने जिस हिसाब से यहाँ पे लीड दी थी, बट इंस्टेंटली शट डाउन हो गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ग्लोबली स्पोर्ट्स को शायद एंटिसिपेट करना चाहिए था कि शायद एक ग्रुप पोजीशनिंग हो सकती है। टिगर की बी साइड पे चले गए थे, एक खिलाड़ी बचा था ए पे। अगर वहां पे 8 को टेक डाउन कर लेते विदाउट टेकिंग एनी कैजुअलिटीज, यहाँ पे गेम डन एंड डस्टेड था क्रिप्स। एक राउंड चाहिए, बस एक राउंड। मेई को वापस से डायमेंशनल ड्रिफ्ट दिलवा दिया गया है। अकामे के पास टूर दे फोर्स भी है, ऑफ भी है, सो ऑल दीस कंडीशंस विल कीप डीएफएम एक्टिव। जी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डुअल जीतो, ऑप्स को हटाओ, एंड सारे जो भी प्लेयर खाएगा, ऑफ खाएगा एक। बैठे हैं उनको मारना पड़ेगा। जी आर यूजिंग एवरीथिंग दे कैन टू क्रॉस दिस गैप सेफली। रिकॉल स्टार, टीम पेयर क्रॉस कर गए। ओहो, एंड अकामे फोर्स्ड आउट ऑफ देयर। डीएफएम अभी देखिए रोटेशंस तो उनकी तरफ से आ चुके हैं। 2 खिलाड़ी ए साइड पे होल्ड कर रहे हैं, मीनवाइल 3 खिलाड़ी बी साइड के डीप जस्ट प्लांट सिक्योर करने की बारी। साइट को श्योर करना चाहते हैं कि नहीं, साइट अभी भी हमारे पास है, जब काउंटर करने का मौका आए तब कर सकते हैं। बट आई वांट टू सी ग्लोबल स्पोर्ट्स के क्या प्लान्स है, बिकॉज़ इंस्टेंट रोटेशन आ तो जरूर चुका है, बट ये साइड पे उतना कुछ खास कंट्रोल है नहीं अभी तक। या कुछ भी कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट जो उनके पास हल्का सा बी साइड कंट्रोल था, वो उनको रखना चाहिए था विदाउट स्पाइक। क्रिस्टल के पास स्पाइक था, वो लेट आए, लेकिन इस बार दे गोइंग फॉर अ फुल कमिटमेंट विद ओनली 30 सेकंड्स लेफ्ट। ये कॉस्मिक डिवाइड ऑब्वियसली डीएफएम डिसरिस्पेक्ट करेगी, उसके आगे आना चाहेगी, और जैसे ही वो उसके आगे आए, पैट्रिक उन्हें मार गिराया। ही हैज टू बी द बॉडीगार्ड ओवर हियर, ही हैज टू मेक श्योर दैट द स्पाइक गोस डाउन। लेकिन अब तक कोई भी जी का प्लेयर अंदर नहीं आया है। काउंटर स्टार्स आ चुके हैं डीएफएम की तरफ से। Ken is just trying to bait out a fight. He's just trying to see एस्ट्रा का cosmic divide के दूसरे साइड में मौजूद है। डिवाइडिंग अच्छा था। Nanoswarm's ready. May goes in, get more information, and he has to make a play. ये dimensional drift चल रहा है, operator चल रहा है, DFM they don't wanna go in out from this game yet. Urotan against Arch, जीतते हैं वो duel. May finds it through the boxes. यूज करने की कोशिश, बट इस बार हंटर्स फ्यूरी क्रिस्टल का बहुत घातक साबित होता है। पॉपी साइड के जस्ट बाहर, ही नोस इट्स द मोमेंट, इट्स द मोमेंट। ओह नो, अकामे ने डिफ्यूज कर दिया 10वां राउंड डीएफएम के खाते में। इट वाज सो क्लोज। अकामे 10 एचपी पे बचे। ग्लोबली स्पोर्ट्स अपनी पूरी जान लगा दी उस एक हंटर्स फ्यूरी पे। It did not pay off. Cosmic divide, हंटर्स फ्यूरी, everything invested, but at the end of it all, it's DFM जिन्होंने डबल डिजिट्स टच किया। Imagine अगर यहाँ पे उड़ोतान मरने से पहले अपना नानोस्वार्म एक्टिवेट कर देते तो क्या होता। अगर वो रिवील 1 सेकंड जल्दी आ रहा था एंड थ्रू द स्पैम अकामे मारे जाते तो क्या होता। ये गेम यहाँ पे खत्म हो सकता था। ये छोटी गलतियां ग्लोबली स्पोर्ट्स को सपनों में आएंगी। It will haunt them in their nightmares अगर वो भाई ये अगर हार गए तो भाई थ्रो तो भाई। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि now
big ultimates have been baited out. Neither of these teams have anything to work with. सिर्फ आर्ट के पास 8 पॉइंट दूर है वो हंटर्स फ्यूरी से, वही एक अल्टीमेट आ सकती है. बाकी सारे प्लेयर्स have been covered already. ये डबल सेंटिनल सेटअप जो DFM के लिए है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, because they can keep playing passively, they can keep giving away art control to global esports and they will not care about it. बार बार आर्ट कंट्रोल मिल रहा है जी को, इस बार उन्होंने लॉकडाउन भी कमिट कर दिया है. DFM इसे रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन अकामे बहुत आगे पहुंच चुके हैं. क्या इनको क्लियर आउट करने के लिए केलीएस सावधानी से आगे बढ़ेंगे? चलिए इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट मिल चुका है. ऑपरेटर है वहां पे केलीएस, ही नोज व्हाट ही इज डीलिंग अगेंस्ट. मीनवाइल जब तक अकामे यहां पे भाई ऑलमोस्ट ले लिया था, बट दिस सीम्स लाइक कि ग्लोबल esports और उनकी पोजीशनिंग इट डज नॉट एब्सोल्युटली मैटर. DFM हमेशा अपने ट्रेड गेम के सहारे वो लीड बना के बैठे हुए, वो मैन एडवांटेज वो बना के चल रहे हैं. 10-11 का स्कोर लाइन केलीएस नोज की ऑपरेटर लेके जाना पड़ेगा उनको. भाई वोटी मत जा भाई. He's not going for it. Wow, Crips. कितने राउंड्स DFM ने जीते? 12 फाइट्स. लेकिन अभी तक तो 7 राउंड हो चुके होंगे. हाँ मैसिव चोक चल रहा है यहाँ पे. बार बार ग्लोबल esports को आर्ट पोजीशन का एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन वो एडवांटेज को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे प्लांट में, फ्रैग में. ओह, he makes it across with the op. One final round. या तो ओवरटाइम है, इकोनॉमी है, लेकिन अब DFM का कॉन्फिडेंस स्काई हॉक पहुंच चुका है. उन्हें मालूम है कि अगर हम भाई ये लोग क्यों पुश करते हैं भाई जब ऑप जी को पूरी तरह से शट डाउन कर सकती है, एंड जीई अब तक उन्हें आउट एम नहीं कर पाए हैं. ना ही उनके पास इतनी इनिशिएटर यूटिलिटी है कि वो ऑप को बार-बार फोर्स बैक कर दे. या इसका मतलब एक ही उपाय है, शायद उनको मिड प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा. बार बार वही आर्ट के थ्रू आ रहे थे जरूर, बट इस बार रीपोजिशनिंग करना पड़ेगा आर्ट पे, बिकॉज यहाँ पे अकामे मौजूद है, पैट्रिक हु के पास एक ऑपरेटर अपना खुद का. once again just holding down the mid positions. अब देखिए यहाँ पे पापी भी बी साइड के तरफ कंट्रोल लेना तो जरूर चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज गोना गो अग्रेसिव, बिकॉज उनको पता है अकामे जिस तरीके से अपनी एंगल स्विच अप कर रहे हैं, इट wouldn't take him long कि बी साइड पे अच्छा खासा होल्ड लेके वो बैठ जाए. Yeah, and look at how much respect DFM are giving GE. एक बार फिर से साइट पे DFM का कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा है. सारे प्लेयर्स जो भी है वो या तो फ्लावर या तो सीक्रेट चले गए हैं. पापी उनके स्मोक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे. उन्हें ऑलरेडी एक स्मोक यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है. क्या भाई 15 सेकंड में दूसरा स्मोक भी आ जाएगा, और जैसे ही वो आएगा फ्लावर एंड सीक्रेट दोनों कवर करके जी के प्लेयर्स अंदर जाना चाहेंगे. बट फॉर दैट पापी ने एक ऑलरेडी फेक इम्प्लांट किया है DFM के दिमाग में. वो वाइस फॉल बी पे ट्रिगर करके उन्हें थोड़ी बहुत रोटेशंस निकलवाई थी, लेकिन DFM के सारे प्लेयर्स एक बार फिर से ए पे मौजूद है. उन्हें मालूम है कि जी का ओडिनली आर्ट ने भाई they're not able to stop the plant. They go through. आर्ट का हंटर्स फ्यूरी हल्का सा लेट आया है और वो किसी पे भी कनेक्शन नहीं पाएगा. किल नहीं मिला उनको. बैक टू अ 5v5. क्या सीन है भाई. This can be anyone's game, Salty. This can be anyone's game, but make a connection. अब शायद एक मौका गया जी जी है. पैट्रिक हो गोस पे. He needs to find जी 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 more. फाइटिंग. एक मौका चाहिए था ग्लोबल esports को ये जीत हासिल करने के लिए, and finally they do it in style. क्या था जरूर. जी फाइटिंग गाइस.
Delayed a little bit, and are you happy with how you performed tonight? It was fun playing on stage, but I'm not satisfied on what I showed today. So yeah, I will make sure that I will perform better next match. 재미는 있었지만 아무래도 첫 경기이다 보니까 좀 경기력에 스스로 만족스럽지는 않지만 다음에 더 좋은 모습 보여주기 위해서 열심히 할 것 같다고 얘기를 하는데요. 그도 그런 게 사실 스탯상으로는 또 요루를 처음으로 대회에서 꺼낸 거기도 하고 이 테오 브리치 메타에서 이 요루의 역할이 워낙 중요하다 보니까 부담감도 많았을 것 같은데 이런 부담감에 대해서는 어떻게 느꼈는지 물어보도록 하겠습니다. Yeah, well, you had a lot to do. I mean, coming straight into the Teho Breach meta, playing the Yoru, and stat-wise, if I'm correct, it's your first time playing the Yoru with the officials. So, you have to be the one with that pressure to create that space for the team. Was there a sense of pressure for you or a sense of nerves, considering that it was your first game with the team on stage? No, because we scrims a lot, and then I will just do what I need to do, and my teammates got me. 스크림도 많이 했었고 연습도 충분히 돼 있었기 때문에 그리고 팀원들이 잘 도와줘서 오늘 또 힘들지 않고 부담감도 느끼지 않으면서 경기를 치를 수 있었다고 얘기를 하는데요. 마지막으로 이렇게 완전체가 된 क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है पता नहीं भाई. चलो गाइस मिलते हैं आपको कल. बाय बाय.